We are back with LVC CA Inter FM. We completed chapter of investment decision. We completed chapter of dividend decision. We have also completed 3 sessions on management of working capital. What have we learned in these 3 sessions of working capital? So number one, we understood how to estimate the amount of working capital. भाई आपको वर्किंग कैपिटल का पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट दैट वी लर्न. सेकेंड, वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल. ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कैश बैक इनटू कैश and the time taken to complete this entire cycle is called as operating cycle. फिर once the amount of working capital is estimated, from which sources company should generally finance the working capital. कौन से sources से working capital को arrange करना चाहिए, वो भी हमने एक छोटे से concept में देखा. Then we moved ahead in understanding रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. अब हम एक एक स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कैच कर रहे हैं और समझ रहे हैं. तो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में वी अंडरस्टूड दैट वी हैव टू इवेल्युएट डिफरेंट क्रेडिट पीरियड्स गिवन टू और कंपनी कॉन्टेम्पलेटिंग टू गिव टू इट्स कस्टमर्स. From these different credit policies, from these different credit periods, we need to select the best one. The best इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. कंपनी को जो पॉलिसी, जो क्रेडिट पीरियड सबसे ज्यादा फायदा करवा के दे, दैट वी हैव टू सिलेक्ट. तो उसके लिए सर क्या करना है, उसके लिए हमें नेट बेनिफिट कैलकुलेट करना है और चेक करना है कौन से पॉलिसी में नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा हो. हाउ टू कैलकुलेट सर नेट बेनिफिट? देन वी अंडरस्टूड अ डिटेल्ड फॉर्मेट, ग्रॉस बेनिफिट लेस एबीसीडी सीओसीडी. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग. Factoring in a very simple, in a very layman terms, it means outsourcing of your collection service to a professional called factor. Factor are generally banking institutions or other financial institutions. ठीक है. फिर फैक्टरिंग वाले कॉन्सेप्ट में वी लर्न क्या कंपनी को इन हाउस कलेक्शन ही कंटिन्यू करना चाहिए या कंपनी शुड अवेल द फैक्टरिंग सर्विस, किसमें कंपनी का फायदा ज्यादा है. So again we understood that, we evaluate, we compared what is the net benefit if we continue with in-house collection and what is the net benefit if we continue or sorry not continue but if we avail factoring services. जिसमें net benefit सबसे ज्यादा या incremental net benefit is more, is positive if we avail factoring service, then you should go for factoring service. ठीक है. This is what we have learned in previous sessions, in 3 sessions of management of working capital. Today would be the last session of management of working capital. आज के session में we would be taking up the concept of cash and treasury management, and we would be also learning a small concept of payables management. Payables management एकदम सा छोटा सा topic है. So today we would be covering that aspect as well. अच्छा सर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो रह गया. तो इन द फर्स्ट सेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आई टोल्ड यू दैट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज कवर्ड अंडर कॉस्टिंग पेपर अंडर द चैप्टर ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग. ठीक है. सो आज जो भी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में बचा है, दैट कॉन्सेप्ट वी विल कवर एंड वी विल एंड द सीए इंटर एफएम सेशंस फॉर मॉड्यूल 2. ठीक है. सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल. Okay, I hope my screen is visible to everyone present. Now let's first focus on the component of cash. Okay, so first in let's say 1.5 hour we will understand about cash and treasury management. अब इस चैप्टर में सीखना क्या है? तो हमें सीखना है how to prepare the cash budget. कैश बजटिंग सीखना है. ठीक है. ओके सर, कैश बजटिंग क्यों सीखना है सर? वाई टू एस्टिमेट द फ्यूचर कैश नीड्स? व्हाट इज द होल पर्पस टू प्रिपेयर कैश बजट? सो अ सिंपल लॉजिक, द सिग्निफिकेंस ऑफ कैश बजट इज कि मान लो
you are working under a CFO. You are a financial management manager and you are working under a CFO of, let's say, one of the FMCG companies. Now CFO has given you a task. क्या टास्क दिया है? तो टास्क ये दिया है कि after, see today is July, right? Give me what would be the cash bank balance on 30th November 2026. ठीक है, this is the task CFO has given to you, that give me the amount of cash and bank balance that would be on 30th November 2026. So you have to give. He has given you the task. तो आपने क्वेश्चन पूछा, सर 30 नवंबर तो फ्यूचर की डेट है, फ्यूचर का कैश बैलेंस मैं कैसे दूं? आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, आई एम अ फाइनेंस गाय. हाँ सर, आप 16 जुलाई का कैश एंड बैंक बैलेंस पूछोगे तो आई कैन गिव यू, बिकॉज आई हैव ऑल द अकाउंट्स रेडी टिल डेट विद मी. So as on today, what is the cash and bank balance I can give you? I cannot give you 30th November का cash and bank balance, future का cash and bank balance, because I am not astrologer. But CFO is saying नहीं, आपको देना पड़ेगा. Prepare some reports and give me. Then what you will do? What you will tell to CFO? You will tell कि क्यों चाहिए 30th November का आपको cash and bank balance जानने की उत्सुकता क्यों है? Why you want to know cash and bank balance as on 30th November? What is the whole purpose of knowing that balance as on 30th November? So CFO explained, see, December में we are planning for major expansion in the company. We are planning to take various multiple projects and all are lucrative projects. So obviously I would need some funds for investment. So if I don't know what would be the amount, what would be the cash position as on November, how can I plan about December investment? So for that purpose I need. Understood? Oh, sir, now I understood your point. You are right that you want to know the balance as on November so that you can plan in December, Jan, Feb about your investment activities. Correct. So now, sir, understood, the objective is very clear. Cash budgeting is prepared so that you can get the estimate of your cash and bank balance, and that estimate helps the management in future decision making about various investments. Understood, everyone? Okay, so CFO said, ठीक है, आप समझ गए, आप बना के दो. Now, okay, so now you are ready to prepare because you know the objective why you want to prepare the cash budget or the cash position statement. So now you will ask the CFO, yes sir, मैं बना के तो दूंगा, but I would need some data. I would need some future estimated data about what would be the likely sales in this 6 months or in this 5 months. What would be the collection from customers? When would that collection happen? What would be the purchase amount? What would be the likely future expenses? So this all data from different teams I need to collect. Okay? So CFO will help you in gathering this data. Understanding? And once this data is gathered, you will prepare future cash budget. Cash budget for maybe August, September, October, November, 4 months. And as on 30th November, you will estimate the amount of cash and bank balance that company will hold. Why this is an estimated amount? Because यहाँ पे हम future की बात कर रहे हैं. So future is always uncertain. It is always backed with certain assumptions behind that data. Are you following? So cash budget ka ultimate significance or importance is to know the balance so that you can plan for future investment decisions. Understood? This is the whole objective why cash budget is ideally prepared. But again, it is budgeting. Budgeting means पास्ट का कोई बजटिंग नहीं होता. बजटिंग जो भी होता है वो फ्यूचर का होता है. ठीक है? बजटिंग इटसेल्फ मींस एस्टिमेशन. सो एस्टिमेशन इज ऑलवेज ऑफ फ्यूचर, एंड व्हेनेवर फ्यूचर इज देयर इज सम अनसर्टनिटी. जहां जहां फ्यूचर की बातें करेंगे एफएम में, वहां वहां अनसर्टनिटी होती है. ठीक है? सो दिस ऑल बजटिंग or the cash position that you prepare will be for future data. And since future is uncertain, all the data that you prepare would be on estimated basis.
on the best judgment basis. ठीक है, on the best judgment of different departments. Let's say आपने sales का estimation लिया for August. Let's say sales is 2 lakh. This is the data that sales team will give you. But again, this is their best judgment. This might not be your actual sales in August, but उनको अंदाजा है कि इतना हो सकता है. ठीक है. So under learning objective number 1, in a very simple term, if I want to explain you cash budget, then cash budget is nothing but your receipts and payments account. ये हम जो बचपन में बनाते थे ना 11th-12th स्टैंडर्ड में, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, वही बनाना है यहाँ पे भी. बट ओनली द डिफरेंस बिटवीन द रिसीप्ट्स पेमेंट अकाउंट दैट यू प्रिपेयर्ड वाज ऑन एक्चुअल डेटा. जो ट्रांजैक्शंस कंपनी ने कर दिए थे उसका यू आर प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. आर यू फॉलोइंग? बट इन दिस चैप्टर वी विल प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट not for the transactions that have already been occurred. Are you following? But for the future likely transactions. Understood? बस इतना फर्क है. बाकी as it is you have to prepare that cash and bank account, receipt payment account. But the only difference is पहले हमने जो 11th-12th में सीखा था, that receipts and payment account reports the transactions that were already occurred. जो घटना घट चुकी थी, फिर यहाँ पे पोस्टिंग होता था under cash bank account. But in this chapter under cash budgeting, we will again prepare that same account, but for future data. ठीक है? That is the only difference. ठीक है? So receipt payment account, again since we are here to prepare receipts payment account, हमें again उसका format समझना होगा. So the format of receipts payment account would look something like this. Let's say हमें August, September, October और November, we need to prepare 4 months cash budget. ठीक है? So 4 months लिख दिया. I will start with opening balance. Opening balance of August will be closing of July. Clear? फिर यहाँ पे I will add some receipts and I will deduct some payments so that I get closing balance. ठीक है? Closing balance of August again will be opening balance of September. See, जिस भी students के father is having दुकान, is having shop, then it is nothing but your गल्ला, दुकान का गल्ला. गल्ले में कितना पैसा आया, गल्ले में से कितना पैसा जा रहा है, that is your cash budget, but for future transactions. ठीक है? In short, आपको ऐसा सोचना है कि मैं गल्ला चला रहा हूं दुकान का. आई एम रनिंग दैट कैश काउंटर ऑफ माई शॉप. ठीक है? सो वॉट एवर कम्स इन विल गो अंडर रिसिप्ट साइड. जिस भी सोर्स है, फ्रॉम विच एवर सोर्सेज मनी इज कमिंग, इनफ्लो हो रहा है, गल्ले का अमाउंट बढ़ रहा है, कैश काउंटर इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, इट विल गो अंडर रिसिप्ट साइड. ठीक है? एंड पेमेंट वुड बी, जिस भी सोर्सेज से पैसा जा रहा है, outflow of money from your galla, from your cash counter will come under payment side. Clear? So it is nothing but your shop ka galla. So what are the likely receipts? What could be the likely receipts in any business? So can I say likely receipts would be number 1, sales, but sales be cash sales. Yes or no? See, here we are preparing receipts payment account. We are not preparing net profit and loss statement. ठीक है? It means August में जो भी पैसा आ रहा है, that will come under receipt side. September में जो भी पैसा आ रहा है, that will go on the receipt of September. Are you understanding? Let's say we incurred, we did a sale of 10 lakh rupees in August. ठीक है? तो August में sales तो हो गया, but money is receiving in November. Are you following? So it will not reflect anywhere. Sales to ho gaya, it will increase your profit, but you have not received money. And here, under this chapter, under cash budget, we are specifically talking about the receipt of money and payment of money. Are you following? So if sales is done in August and you have received, you have collected that amount in December, then it will not come in our budgeted period.
हाँ, नवंबर में हो गया कलेक्शन तो नवंबर के कलेक्शन में, नवंबर के रिसिप्ट साइड में आएगा। Followed. So please be very focused. You have to understand when the receipt is happening and when the payment is happening. You don't have to see when the sales or purchases are happening or when the expenses are getting accrued. ठीक है, वो नहीं देखना है। उसका पेमेंट, उसका रिसिप्ट कब हो रहा है, टू रिपोर्ट इन दिस chapter, in this cash budget. Clear? So be clear with your basics. So cash sales will come under receipt side. Another would be collection from debtors. डेटर से जब जब कलेक्ट, जिस जिस महीने में कलेक्शन होगा उस महीने में वी विल रिपोर्ट इट ऑन द रिसिप्ट साइड। ठीक है। देन लेट्स से इफ कंपनी हैज इशूड शेयर कैपिटल, ये तो इशूइंग ऑफ शेयर कैपिटल मींस मनी रिसीव्ड, although it will not impact your profit and loss statement, but we are least concerned with profit and loss. We are concerned with receipt payment account. Money coming in, you report it under receipt side. Clear? So issue of share capital. पैसा आया तो receipt side. अच्छा, if you sell some investment or if you sell some fixed asset, it will come under receipt side. So I'm just writing some general line items. इतने ही है receipt side, ऐसा मत समझना. These are some of the general line items. Clear everyone? Likewise, some general line items on payment side would be, if you are purchasing on cash basis, तो cash purchases आएंगे. Again, I'm just writing some of the common general line items that you will frequently come across to the problems. फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स आएगा. लाइकवाइज पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे सैलरीज, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो उनका जब जब जिस जिस महीने में पेमेंट होगा तब तब उस महीने में रिपोर्ट होगा. क्लियर? अच्छा, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ऑपोजिट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. सो अगेन इट विल गो अंडर पेमेंट साइड. फिर if we purchase any new investment, if we purchase any new fixed asset, so again on the payment side. If we pay taxes to the government, again on the payment side. So these are some of the general common line items under payment side that you will see. ठीक है? अच्छा, closing balance of August will be opening balance of सितंबर. ठीक है? फिर ऐसी गेम खेलते 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 वी विल रीच एट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नवंबर. एंड आफ्टर रीचिंग एट दिस पॉइंट, लेट्स से आवर कैश एंड बैंक कम्स टू 5 lakh. ठीक है? सो वंस यू एस्टिमेट दिस अमाउंट, नाउ CFO, financial manager can take some decisions because they now know that the amount, estimated amount that would be left with the company would be 5 lakh. So accordingly, they can arrange the funds from other sources for future investment purposes. Are you understanding? So मुझे इससे ये पता चल गया कि अंदाज से मुझे 5 लाख का बैलेंस मेरे पास रहेगा as on the end of November. So if I want to, let's say, take a project of 20 lakhs, then somehow I need to arrange more 15 lakhs from some other sources. Are you following? Maybe taking additional loan or maybe issuing fresh capital. Understanding? But unless you receive this, you estimate this amount, you cannot decide. Understanding? So that's why you need to prepare cash budget. Everything in FM has some objective, has some purpose. So be clear with that purpose and move on with FM. Clear? So everyone understood the format of cash budget. So in this cash and treasury management, our first learning objective is to prepare cash budget. And I told you cash budget is nothing but a simple receipts and payment account, but for future data, and that future data will be on estimated basis. Clear? It cannot be actual. Future cannot be predicted 100%. Even astrologers are not 100% confident कि future में आपके साथ
ये चीजें होंगी ही होंगी। आर यू फॉलोइंग? इट इज जस्ट प्रेडिक्शन एस्टिमेशन। Clear? So learning objective one, I hope everyone is clear. We will do some practical problem. We will take some numbers so that better clarity भी मिल जाए आपको and you are through with the cash budget. Learning objective number two. Under this chapter, we will also learn some optimum cash models. Optimum cash management models. Now, what are these cash management models all about? तो स्टूडेंट्स एक बेसिक फंड आप क्लियर रखो कि कंपनी में कीपिंग एक्सेसिव कैश देन रिक्वायर्ड इज ऑल्सो हानिकारक टू कंपनीज हेल्थ, एंड कंपनी कीपिंग वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश, वेरी लेस कैश, इज ऑल्सो हानिकारक टू कंपनीज हेल्थ। सो एक्सेस कैश बैलेंस रखना या एकदम कम कैश बैलेंस रखना इज हानिकारक, इज इंजोरियस टू कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है? सो देयर हैज टू बी सम ऑप्टिमम कैश बैलेंस दैट कंपनी शुड कीप। आर यू फॉलोइंग? कंपनी अपने पास 1 करोड़ 15 करोड़ नहीं रख सकती। इफ यू आर अ स्मॉल कंपनी एंड यू आर कीपिंग दिस 15 करोड़ आइडियल, देन यू विल नॉट ग्रो इन द बिजनेस। आर यू फॉलोइंग? कंपनी कैन नॉट कीप 1500 rupees as well. If company keeps some or maintains a cash balance of just 1500, how it will survive? How will it pay day-to-day expenses? Are you following? So keeping excessive idle cash in the company is also injurious to company's health. Why? Because you are losing an opportunity to earn from this 15 crore. Are you following? If you invest in this business, you might earn something good return from that business rather than keeping it idle. Are you following? Keeping very less cash balance is also injurious because you will not survive if you will not be able to pay your day-to-day routine expenses. Day-to-day routine expenses अगर payment नहीं कर पाओगे, business stop, shut. Are you following? So there has to be some optimum cash balance that company should keep with it and maintain it at regular interval of time. So what amount of cash company should keep? कंपनी को 15 करोड़ रखना चाहिए, 1500 रुपए रखना चाहिए, 10 लाख रखने चाहिए? What should be the ideal cash that company should keep? We will learn from cash management model. Are you following everyone? Understood? We will learn from cash management. दो मॉडल है. One is model given by William J. Baumol. So one of the model is given by finance scholar William J. Baumol. And this is exactly the replica of EOQ model that you have learned in inventory management, economic order quantity. Are you following? That model was also given by this master called William J. Baumol. What was EOQ? EOQ was the best ordering quantity, the optimum ordering quantity of stock, of replenish the stock. Are you following? So in similar analogy, in similar terms, even under cash management, William J. Baumol is giving that same model. What should be the optimum cash balance that company should keep? Are you following? Apart from this, there is one more model called as Miller and Orr model. ठीक है? Miller and Orr model. इस पे कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है मिलर एंड और मॉडल पे. इट इज जस्ट अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट दैट दिस फाइनेंस स्कॉलर हैज गिवन. ही इज ट्राइंग टू गिव द रेंज ऑफ द मैक्सिमम कैश बैलेंस दैट कंपनी शुड गिव and the lower range of cash balance that company should keep. So cash balance of the company में cash should always lie between this higher range and lower range. हायर रेंज की से ऊपर कैश बैलेंस नहीं जाना चाहिए, लोअर रेंज से नीचे कैश बैलेंस नहीं जाना चाहिए. सो मिलर एंड और इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट, बट विल सी इन सम टाइम. क्लियर? सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, or I would say objective of this component, cash and treasury management, is clear to everyone. Correct? So now let's take some practical problem, and before that, if you just want to write the format of cash budget, you can quickly take it. You can quickly note it down. So again, I'm repeating, I've just mentioned some general common line items on the receipt side. ठीक है? सिर्फ इतने ही लाइन आइटम्स है ऐसा नहीं. वी हैव टू
सी द क्वेश्चन एंड वी हैव टू डिसाइड पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं. पैसे आ रहे हैं, पोस्ट इट ऑन द रिसिप्ट साइड. जा रहा है, आउटफ्लो है, पोस्ट इट ऑन द पेमेंट साइड. क्लियर एवरीवन? ओके. सो जिस भी स्टूडेंट्स को wants to note down this format in 5, 4, 3, 2, 1. This is receipt side. Five, four, three, two, one. The payment side. So at your lower classes, you are preparing receipts payment account T format में horizontal बनाते थे. Now we have become more professional. We have become more organized in our life. So we will prepare in vertical format, in statement form. Following? But ultimately the principle is same. Receipt payment account ही बनाना है. Okay. Then we will learn about some of the cash management models given by finance scholar William J. Baumol, Miller and Orr. Clear? Okay. So now moving forward, let's take some practical problems from your module and let's see how cash budget is prepared. Okay, so everyone please open your module. Chapter 9, Management of Working Capital, Unit number 2, Treasury and Cash Management. ठीक है? So again, if you see the format, receipt and payment side, ठीक है? हमने opening balance plus receipt किया था. Ultimately, answer would remain same. So these are some of the general line items on the receipt side. Likewise, general line items on the payment side. Let's come to illustration number 6. On solving illustration number 6, you will get total clarification on how cash budget is prepared. Okay, so let's try and solve illustration number 6 from the module. It is on page number 9.44. Prepare a monthly cash budget for 6 months beginning from April 2024. If first of all, my budgeted period is for 6 months and it is starting from April. So कहना है 6 महीना, अप्रैल होगा, मई होगा, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. ठीक है, 6 महीना. सो इस 6 महीने में जब जब जो रिसिप्ट पेमेंट होगा दैट ओनली वी विल पोस्ट. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. ओके, 6 months done. So first step, from the first line itself you got to know that this question is on cash budget. ठीक है, तो step number 1, prepare the format. पहले आप फॉर्मेट बना दो. Format is very simple. Opening balance, add receipts, leave some spaces, more than half space, payments, less payments, leave half a page and then write closing balance. So एक पेज में आइडियली आपका पूरा कैश बजट बन जाएगा. ठीक है, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट पेज वी कैन स्टार्ट विथ वर्किंग नोट. Okay, the estimated monthly sales from January to October are as given. ये तो क्या, will we directly post this amount in our cash budget? No, we want कि सेल्स तो हो गया जैन का, but it is possible कि जैन के सेल्स का अमाउंट आपको जुलाई में मिलता हो.
Are you following? It is possible कि मार्च का sales 1,40,000 you collect it in August. Are you following everyone? So we need to see the timing of collection. When the receipt is happening, when the payment is happening. ठीक है? Okay, so sales are done. Wages and salaries for respective months are also given. Now very important line starts. Very important note. Of the sales, 80% is on credit, 20% is on sales. ये मतलब कि my अप्रैल का सेल्स इज 80,000. तो कैन आई से 80,000 का 20%, 16,000 आई वुड रिसीव इन अप्रैल इटसेल्फ. Yes or no? उसका पैसा I would receive in April itself. Likewise, 60,000 is the total sales of May. तो उसका 20%, 12,000 I will obviously receive in that month itself. So can I say it will fall in my budgeted period? So first of all, I will write cash sales. ठीक है? तो अप्रैल का टोटल सेल्स इज 80,000. उसका 20% means 16,000 would be my cash sales, and that amount I would have received in April itself. So 80,000 का 20%. Likewise for May as well. May का 60 into 12,000. June में it would be 16, July में 20, August में 16. 16, July में 20,000. अगस्त में अगेन 16 एंड सितंबर में इट वुड बी 60,000 का 20%. ठीक है? तो 12,000. ओके, बट बैलेंस 80% इज ऑन क्रेडिट. ओके, सो कैन आई से क्रेडिट सेल्स ऑफ अप्रैल वुड बी 80,000 का 80% मींस 64,000 वुड बी क्रेडिट सेल्स. नाउ वी हैव टू सी कि अप्रैल में क्रेडिट सेल्स तो 64,000 का हुआ, उसका कलेक्शन कौन से महीने में हो रहा है? When is the collection of April credit sales actually happening? So you will find that information in the note itself. लिखा है 80% is on credit. ठीक है? So 75% of credit sales are collected within 1 month after sales and balance in 2 months after sales. Oh, so from this information I got to know कि credit sales का collection actual में कब हो रहा है. Are you following? So again I am repeating, see, credit sales of April is 80,000, 64,000. सर 64,000 क्रेडिट सेल्स कैसे आया? तो 80,000 का 80%. ठीक है? तो 64 आया. नाउ दे आर सेइंग ये 64,000 का 75% collection is happening in next month. Means can I say 64,000 का 75% means 48,000 is collection is happening in May month, and बाकी का 25% of credit sales. तो 64,000 का 25%, 16,000 we are collecting in June. Understood everyone? So can I say April के credit sales का पैसा some portion you are collecting in May, some portion you are collecting in June. Understanding? तो likewise just visualize मार्च का क्रेडिट सेल्स का कुछ अमाउंट यू विल रिसीव इन अप्रैल, कुछ अमाउंट यू विल रिसीव इन मे. आर यू फॉलोइंग? लाइकवाइज फेब्रुवरी का क्रेडिट सेल्स का अमाउंट का कलेक्शन some amount would have happened in March and some amount would have happened in April. Understanding? So for that we would need to prepare a working note जिसमें से अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी आपको. When is collection happening? ठीक है? So working note 1, calculation of collection from debtors. From debtors लिखो या customer लिखो, it is one and the same. ठीक है? So let's say this is Feb, March, April, May, June, July, August, September. सर हमारा बजटेड पीरियड तो अप्रैल से सितंबर है, आपने फेब मार्च क्यों लिखा? ये कहना है फेब मार्च के क्रेडिट सेल्स का कुछ पैसा यू आर रिसीविंग इन अप्रैल, वैसे ही मार्च के क्रेडिट सेल्स का कुछ पैसे यू आर रिसीविंग इन अप्रैल एंड सम इन मे एज वेल. Are you following? So that's why I am writing
फॉर फेब एंड मार्च एज वेल, ठीक है, वो 2 महीने का भी मैं अलग से लिख रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट क्रेडिट सेल्स का अमाउंट। क्रेडिट सेल्स इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट सर क्रेडिट सेल्स पूरे सेल्स का 80% है। तो फेब में 1,20,000 वॉज टोटल सेल्स, उसका 80% मीन्स 96,000 इज क्रेडिट सेल्स इन फेब, ठीक है। लाइकवाइज मार्च का क्रेडिट सेल्स इज 1,12,000, अप्रैल का क्रेडिट सेल्स वुड बी 64,000, मई में क्रेडिट सेल्स वुड बी 48,000, जून में क्रेडिट सेल्स वुड बी 80,000 का 80% मीन 64,000, जुलाई में क्रेडिट सेल्स 1 लाख का 80% मीन्स 80,000, अगस्त में क्रेडिट सेल्स 80,000 इंटू 80% 64,000, एंड सितंबर में क्रेडिट सेल्स वुड बी 60,000 का 80% 6848. Clear? So this is the amount of credit sales. This is not the amount of receipts. Huh? This is the amount of credit sales happening in that respective months. Now, can I say 75% of above collection in next month? 96,000 is the credit sales of February. Uska 75% collection is happening in the month of March. Are you following? Within 1 month after sale. And baki ka 25% of that credit sales you are collecting in 2 months after sales. Are you following? So collection in next month. Balance 25,000, 25%. Collection in 2 months. Clear everyone? Okay. So 96,000 ka 75% collection is happening in March. Are you following? 72,000 collection is happening in March. And can I say bacha hua 24,000 collection is happening in April? Yes or no? Yes or no? Clear? Likewise, total credit sales of March is 1,12,000. Uska 75%. So it comes to 84,000. वो अप्रैल में कलेक्ट हुआ होगा, अप्रैल के गल्ले में आया होगा, एंड बचा हुआ 28,000 collection would have happened in May. I hope everyone is following. Clear? अच्छा, now let's come to credit sales of April 64,000. तो 64,000 का 75% collection happening in May. ठीक है, 48,000 in May. Balance 16,000 happening in June. Balance 16,000 happening in June. ठीक है. Okay, let's come to May credit sales. 48,000 का 75%. 36,000 happening in June, and 48,000 minus 36,000. 12,000 happening in July. So 12,000 happening in July. Okay. Likewise, June ka credit sales. Total credit sales in June is 64,000. 75% of this 64,000, that is 48,000 collected in July. And balance 16,000 collected in August. I hope everyone is following. Okay. July ka credit sales 80,000. 75% of this 80,000. It means 60,000 collected in August itself. And balance 20,000 collected in September. ठीक है. August का sales 64,000. उसका 75%. 48,000 collected in September. And balance 16,000 would have been collected in October, but that is outside our budgeted period, so it will not come over here. Are you following?
Likewise, 48,000 is credit sales in September. Uska 75%, which comes to 36,000, would have been collected in October. Again, that is outside our budgeted period. We will not note it over here. Clear, everyone? So this is how you calculate the amount of collection in each month. Now our budgeted period starts from April. So April mein, can I say my total collection is of 80 plus 84 plus 24, 1,08,000. Are you following, students? 84,000 and 24,000 is total collection in April. फिर मई में कितना है? 48 plus 28, 68, 76,000. जून में कितना है? तो 36 plus 16, 52,000. जुलाई में कितना है? 48 plus 12, 60,000. अगस्त में 60 plus 16, 76,000. And September में 48 plus 28, 60,000. So this is your actual receipts happening in that respective months. So हमें इस amount से मतलब है. Following collection from debtors. So let's just copy paste this amount in our original cash budget. Collection from debtors. So number 2, collection from debtors. ठीक है? And this we have calculated using working note number 1. I guess for year 1 it was for April month it was 1,08,000. 7652, 60, 76, 68, 7652, 60, 76, 68. Clear, everyone? So this is our collection from debtors. Same story will repeat for purchases as well. See, can you see our collection from debtors? It is matching with our working note number 1. 76, 108, 76, 52, 60, 76, 68. 108, 76, 52, 60, 76, 58. Clear? So I hope everyone is clear with collection from debtors. Let's move to adjustment number 2. Purchases amount to 80% of sale. A company का purchases भी है. And what is the amount of purchases? It is 80% of that respective sales. Okay. And are made on credit. Oh, so you are not doing purchases on cash basis. You are again doing purchases on credit. You are buying materials on credit and paid for in the month preceding the sales. Are you following, everyone? So first of all, पहले तो जिस महीने का सेल्स है उसका 80% उस महीने का परचेजेस हो जाएगा. अब ये परचेजेस का पैसा हम कब भर रहे हैं? वी आर पेइंग मंथ प्रीसीडिंग द सेल्स. आर यू फॉलोइंग, एवरीवन? मतलब एक महीने पहले भर रहे हैं. वी आर पेइंग इट इन एडवांस. So let's calculate purchases from working note number 2. Not purchases, but payment for purchases. Working note number 2. Calculation of payments for purchases. Okay? So this is March, April, May, June, July, August, September, and I am also writing for October. Why? Because October महीने का purchases का payment I would have done in September. ठीक है? वैसे मार्च की लिखने की जरूरत नहीं थी, but since I have written, let's just write. So first of all, let's calculate the amount of purchases. So can I say it is 80% of sales?
Yes or no? 80% of that respective month sales. Okay. So sir, what is the amount of sales in March? So March का sales is 1,40,000. उसका 80% would be amount of purchases. So 1,12,000 is purchase का amount in March. अप्रैल का परचेज अमाउंट कितना होगा? 80,000 इंटू 8, 64,000. मई का परचेज अमाउंट कितना होगा? मई में 60,000 इज द टोटल सेल्स, उसका 80%, 6,848. जून में हाउ मच वुड बी द परचेज अमाउंट? जून में इट वुड बी 80 इंटू 80%, 64. जुलाई में 80,000 would be the amount of purchases. अगस्त में 64. सितंबर में 6,848. एंड अक्टूबर का परचेजेस वुड हैव बीन 1 लाख इंटू 80%, 80,000. ठीक है. सो दिस आर द अमाउंट ऑफ परचेजेस. आई एम नॉट कंसर्न विद दिस अमाउंट, आई एम कंसर्न विद इसका पेमेंट कब, कौन से महीने में हो रहा है. फॉलोइंग. सो दे आर सेइंग पेमेंट इज हैपनिंग 1 मंथ बिफोर. ये मतलब मार्च महीने का हैपनिंग इन फेब, अप्रैल का हैपनिंग इन मार्च. आर यू फॉलोइंग? पेमेंट of above 1 month preceding the sales. Preceding means 1 month before the sales actually happening. ये तो कहना है इसे अप्रैल में मई महीने के परचेजेस का पेमेंट हुआ होगा. द परचेजेस दैट वी हैव मेड इन मे वुड हैव बीन पेड इन अप्रैल. यस और नो? 1 month बिफोर प्रीसीडिंग द सेल्स. सो कैन आई से इन अप्रैल वी वुड हैव पेड 48,000. अच्छा, इन द मंथ ऑफ मे वी वुड हैव पेड द अमाउंट ऑफ जून परचेजेस. आर यू फॉलोइंग? 48, 64, 80. In June, we would have paid the purchases of July. Clear? 64, 48, and 80. In September, we would have paid the amount of October purchases. Clear? 1 month before. So we are driving towards left. Arrow left में जा रहा है. Clear everyone? So 48, 64, 80. 64, 48, 80. 48, 64. Again, this is a payment. So हमें पेमेंट साइड लिखना है, रिसिप्ट साइड मत लिखना. पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट नंबर 2. ठीक है. 48, 64, 80. I guess these were the numbers. 64, 48, 80. 64, 64, 48, 80. Okay, so this is payment to creditors. When the actual payment is happening, at that time we will post it in the receipt payment account. Just check your answer as well. Purchase देखो 48, 64, 80, 64, 48, 80. Matching with our working note. इन्होंने working note is not prepared. You can prepare working note, and if you are able to solve directly as well, you can directly solve as well. ठीक है. बट वर्किंग नोट से समझना आसान हो जाता है, एंड चांसेस ऑफ लेस एरर हैपनिंग इफ यू प्रिपेयर वर्किंग नोट. क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स मूव टू एडजस्टमेंट नंबर 3. Number 3, sales is done. Number 4, purchase is done. The firm has 10% debentures of 1,20,000. Okay, so can I say my interest on debentures would be 12,000 for the entire year? 1,20,000 into 10%.
Okay, now when are these interest paid? Interest on this has to be paid quarterly. Oh, so sir, we are not making monthly interest payment. First of all, we are making quarterly interest payment. Matlab, we are paying 3,000 at a time. Clear? For entire quarter. And when is the payment happening in Jan, April, and so on? Are you following? So let's prepare working note number 3. Calculation of interest payments. First of all, interest in rupees would be 1,20,000 into 10%. So which comes to 12,000 rupees per annum. Okay? But we are not paying monthly interest. Now we are paying yearly interest. We are paying quarterly. So ये 4 बार payment होगा. 3,000 for each quarter. So when is the payment happening? So they are saying first installment to be paid in January. So let's say this is January. दूसरा installment would be Feb, March and April. ठीक है? तो कहने से थर्ड इंस्टॉलमेंट वुड बी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई. जुलाई में भरा होगा एंड अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. दिस वुड बी द पैटर्न ऑफ पेइंग क्वार्टरली इंटरेस्ट. First, if you have paid in Jan, so they are saying second installment to be paid in April. So can I say बीच में there is a gap of 2 months. So can I say third installment would be paid after a gap of 2 months, May, June, correct? July में. फिर again fourth last installment would be paid again after a gap of 2 months, means August, September छोड़ दो, October. ठीक है? Okay, so these are the payments, installments paid. Jan is not in our budgeted period. October is also not in our budgeted period. Our budgeted period where April and July are there. Okay? So now let's come to payment side and we will write interest on debentures. Interest on debentures from working note number 3. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड इन अप्रैल, मींस अप्रैल में 3,000 पेमेंट साइड दिखेगा, गल्ले में से पैसे जाएगा. दूसरा इंस्टॉलमेंट मई में नहीं होगा, जून में नहीं होगा, जुलाई में होगा. तो 3,000 अगेन वी विल पे इन जुलाई. अगस्त सितंबर में वापस कोई पेमेंट इंटरेस्ट का नहीं होगा. क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का पेमेंट? So just check interest on debentures in April then in July. Are you following? बस 2 महीने में दिखेगा, April and July में. Clear? Okay. So adjustment number 5. Note number 5 is also done. Firm has to make advance payment of tax of 5,000 in July 24. A company is paying tax in advance. Advance हो, delay हो, payment हो रहा है means outflow. Money is going out from my cash counter. गल्ले में से पैसा जा रहा है. कब जा रहा है? जुलाई में. तो जुलाई के गल्ले में से पैसा आपको निकालना है. ठीक है? So tax payment it will come on. This is a one line adjustment. Tax payment when it is happening in the month of July. तो जुलाई महीने में payment side we will write 5,000 rupees in the form of tax payment. Clear? The firm had a cash balance of 20,000 on April 1, 2024. Okay, so can I say as on 1st April 2024, yani ki the date on which I am starting my budget, the amount is 20,000. Yes or no? So this is nothing but my opening balance 20,000. क्लियर? गल्ले की शुरुआत मैंने कितने रुपयों से की थी? 20,000 से on 1st April 2024. Clear? Okay. Which is the minimum desired level of cash balance? It means at any given point in time, company wants to keep this amount of cash balance. मतलब कंपनी ये कहना चाहती है कि हमारे गल्ले में महीने का शुरुआत हो या महीने का अंत हो, 20,000 तो होने ही चाहिए. Are you following?
तो आई एम काउंटिंग क्वेश्चनिंग कि अगर मान लो 20,000 से ज्यादा आया तो क्या करेंगे, मान लो 30,000 कैश बैलेंस बचता है, तो दे आर सेइंग इफ एनी सरप्लस यू इन्वेस्ट, यू पार्क दैट सरप्लस इन शॉर्ट टर्म टेम्पररी इन्वेस्टमेंट. Are you following? So if let's say your cash balance, the closing cash balance comes to 30,000, but company is saying no, our desired level is 20,000 only. गल्ले में 20,000 ही दिखना चाहिए. तो आई एम आस्किंग, तो 10,000 का क्या करूं? तो कंपनी सेइंग एनी कैश सरप्लस यू पार्क इट इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. आर यू फॉलोइंग? सो अप्रैल में वी विल बाय सम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, मींस 10,000 पेमेंट साइड चला जाएगा बिकॉज यू बॉट सम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट. सो कैश बैलेंस विल फॉल टू 20,000. नाउ लेट्स से ऑन द अदर साइड, ऑन द कॉन्ट्रारी, माई कैश बैलेंस, मेरे गल्ले में सिर्फ 15,000 बचता है. तो कंपनी इज अगेन सेइंग नो, आई वांट 20,000. अरे 15,000 ये कहां से लाओ 5,000? सो इज सेइंग अगर टेम्पररी इन्वेस्टमेंट पड़ा हो, यू सेल दैट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ब्रिंग द फंड्स बैक. Understood? This is option one. But I'm saying no, I don't have any short-term investment, or I don't want to break short-term investment. So company is saying deficit, you bring it by temporary borrowings. फिर borrow करो और पैसे लाओ गल्ले में, but गल्ले में 20,000 होने चाहिए. Clear? So if there is shortfall, if there is deficit, then deficit is to be arranged either through liquidation of investment. Liquidation means selling of that short-term investment, or by temporary borrowings. Are you following? And interest on such temporary borrowing has to be ignored. This is what question is saying. It means adjustment note number 7 is trying to say you keep the balance, opening हो या closing हो महीने का 20,000 रखो, और कुछ भी शॉर्टफॉल सरप्लस हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर दो शॉर्ट टर्म फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम. डेफिसिट आ रहा है, यू लिक्विडेट, यू सेल ऑफ योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और यू बोरो, बट 20,000 रखना है. क्लियर? सो फ्रॉम दिस एडजस्टमेंट आई गॉट टू नो कि क्लोजिंग बैलेंस आई हैव टू कीप 20,000. देयर इज नो ऑप्शन इन दैट. मुझे क्लोजिंग बैलेंस एवरी मंथ 20,000 ही रखना है. गल्ले में 20,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं, गल्ले में 20,000 से 1 रुपया कम नहीं. क्लियर एवरीवन? सो 20. सो आई एम जस्ट राइटिंग द क्लोजिंग बैलेंसेस. फिर देखेंगे शॉर्टफॉल हो रहा है या एक्सेस बच रहा है, क्या हो रहा है, वी विल सी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इतना तो पता चला कि 20,000 रखना है भाई गल्ले में पैसा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं. क्लियर? ओके. नाउ अपार्ट फ्रॉम adjustments, is any like see, read from number 1 to number 7. कोई भी एडजस्टमेंट बाकी है? सर बाकी है ना, वेजेस एंड सैलरी वाला नंबर 2, उसका तो कुछ किया नहीं. ओके. हैव दे एनीथिंग मेंशन कि wages and salaries are prepaid preceding the month of sales, or they are paid 2 months after sales, or they are paid 1 month after they are accrued? Nothing. No information on wages and salaries given. So in absence of any specific information, जिस महीने में वेजेस अक्रू हुआ है उस महीने में पेमेंट भी हो गया. क्लियर? सो अप्रैल का वेजेस इज 9,000. इट इज अज्यूम दैट इट वुड हैव बीन पेड इन अप्रैल इटसेल्फ. Clear? Because no specific information like purchases or sales is given. कि wages अप्रैल में accrue 9,000 हुए, but उसका 50% payment in next month, 50% payment in current month, ऐसा no information is given. So in absence of that specific information, wages and salaries accrued are paid in that month itself. Clear? So I'm just writing here wages and salary payment. जिस महीने में वेजेस एंड सैलरी इनकर हुआ उस महीने में वी आर पेइंग. ठीक है? सो अप्रैल में इट इज 9,000, मई में इट इज 8,000, जून में 10,000, जुलाई में 10,999, अगस्त में 9,
सितंबर में 9, 1099. Okay, so I guess all the adjustments of the questions are covered now. अब कुछ भी नहीं बचा है. So can I say now we just need to calculate actual पहले अप्रैल में कैश में गल्ले में कितना था. ठीक है. So I started my cash balance with 20,000. 20,000 से शुरुआत करी थी. फिर सेल्स का कैश सेल्स हुआ 16,000. So let me just add that. So 20 plus 16 plus collection from debtors is 1,08,000. फिर इसमें से I would have made the following payments in April. 48,000 payment to for purchases, 3,000 डिबेंचर का इंटरेस्ट चुकाया होगा, एंड वेजेस एंड सैलरीज 9,000. ठीक है. So can I say in year, sorry, not in year one, in April, my cash balance, actual cash balance remains is 84,000. So let's check that. ठीक है. Okay. So 84,000 is the actual cash balance. Clear? मुझे कितना रखना है? 20,000 रखना है गल्ले में. सर 84,000 आया बट गल्ले में नहीं. आई एम सेइंग आई वांट टू कीप 20,000 ओनली. आई एम आस्किंग बैलेंस 64,000 का क्या करूं? सो दे आर सेइंग इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? ठीक है. सो यहां तक कैन आई से द बैलेंस comes to 84,000? Yes or no? But I want to bring down this 84,000 to 20,000 because company is saying this is the desired level. 20,000 ही रखना है. Excess को क्या फेंक दे? No, you park it in short-term investment. So can I say if I buy short-term investment, payment होगा. So purchase of टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. कितने का खरीदूंगा? 64,000 का. ठीक है. एंड 84 माइनस 64. सो नाउ द रिवाइज बैलेंस कम्स टू 20,000. क्लियर? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल विल बिकम ओपनिंग फॉर मे. अच्छा, मई में क्लोजिंग 20,000 ही रहने वाला है. सो जून का ओपनिंग भी 20,000. जून का क्लोजिंग 20,000 रहने वाला है. जुलाई का ओपनिंग 20,000. लाइकवाइज 20,000 ओपनिंग फॉर अगस्त एंड 20,000 ओपनिंग फॉर सितंबर. क्लियर एवरीवन? सो नाउ लेट्स टारगेट मे मंथ. सो मे में 20,000 वी स्टार्टेड द कैश गल्ला विद 20,000. 12,000 कैश सेल से आया. 76,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर से आया. इसमें से हमने पेमेंट किया टू क्रेडिटर 64 एंड 8,000 फॉर सैलरीज. सो फिर भी माय बैलेंस, आइडियल गल्ले का बैलेंस कम्स टू 36,000. क्लियर एवरीवन? ठीक है. बट मुझे रखना कितना है? 20,000 ओनली आई वांट टू कीप इन माय गल्ला. नो नो, आई हैव 36,000. सो कंपनी इज सेइंग park the balance in temporary investment. Are you following? So again in the May month we will buy additional investment of 16,000. अप्रैल का 64,000 तो as it is पड़ा है. नया मई में 16,000 ऐड हो गया. Are you following? So total amount of investment as on May would be 64 plus 16,000. Clear? 80,000 का पार्क हुआ रखा है in my short term investment. Clear? As on May. Now let's come to June. 20,000 से we started our cash galla plus 16 plus 52. इसमें से I will pay 80,000 to creditors and 10,000 for wages. Oh sir, negative 2,000. मतलब ये तो गल्ले में से माइनस हो गया. So can I say either you sell off the investment?
80,000 का इन्वेस्टमेंट पड़ा है. ए, you have negative cash balance of 2,000. You want to bring it to positive 20,000. तो कहना है इसे 22,000 का अरेंजमेंट करना पड़ेगा. Yes or no? So option one, either you liquidate from this short term investment. 80,000 आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़े हैं, उसमें से 22,000 के सेल आउट कर दो. सो देन 22,000 के सेल आउट करोगे मीन्स गल्ले में पैसा आ जाएगा एंड इट विल रिप्लेनिश, इट विल ग्रो टू 20,000. ठीक है. और अदर ऑप्शन, यू डोंट वांट टू liquidate this investment, you want to keep as it is, then you have no option but to borrow. Clear? But कहीं से तो अरेंज करना ही पड़ेगा. So here can I say I will write add liquidate और borrow, जो भी करना हो कर सकते हो. बट इन शॉर्ट अगर लिक्विडेट कर रहे हो तो यू हैव टू लिक्विडेट 22,000 of investment. And if you are borrowing, you have to borrow 22,000 of amount, but no interest to be levied on that. Clear everyone? So this is for June. अब हम करते हैं जुलाई का. जुलाई का we started with 20,000 plus cash sales 20 plus 60 collection from debtors less 64,000 paid to creditors, 3,000 paid interest in July, 5,000 tax paid in July, 10,000 wages paid in July. So my cash balance, गल्ले का balance positive 18,000 आ रहा है. But my desired balance is positive 20,000. So can I say again नए 2,000 rupees लाने के लिए you either liquidate investment or you either do the new borrowings. ठीक है. So let's check for, देखो दिख रहे हैं 22,000 positive means either you liquidate investment or either you borrow. 2,000 in July, either you liquidate or you borrow. Clear? Let's come to August. August में 20,000 plus 16,000 plus 76,000 less 48,000 less 9,000. So 55,000 is the ideal, is the actual cash balance in the galla. If you see in the August. No, but I want to keep 20,000 only. तो बैलेंस 35,000 का क्या करोगे? यू विल इन्वेस्ट, न्यू इन्वेस्टमेंट. क्लियर एवरीवन? नया इन्वेस्ट करो 35,000, बट गल्ले में 20,000 ही रखना है. क्लियर? सो लेट्स चेक फॉर यस 35,000 न्यू इन्वेस्टमेंट. नेगेटिव मीन्स मनी इज गोइंग आउट, आउटफ्लो रहा है. व्हाई? बिकॉज वी आर बाइंग न्यू इन्वेस्टमेंट. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू सितंबर, लास्ट मंथ. So 20,000 plus 12 plus 68 less 80 less 9,000. So आइडियल गल्ले में बैलेंस बचता है पॉजिटिव 11,000. ठीक है. No sir, but we want to keep 20, we want to keep positive 20. So can I say you have to either liquidate sell of investment worth 9,000 or you need to borrow additional 9,000. Clear? So can you see 9,000 additional borrowing? So at the end, closing balance is your desired level of cash balance. Clear everyone? Did you all follow how to prepare cash budget? The timing of receipt and the timing of payment is crucial. जैसे in the game of cricket, cricket is about timing का game. वैसे ही receipt payment is about timing का game. Timing of receipt, timing of payment. Clear everyone? Not when the actual sales or actual purchases or actual expenses are happening. So this was illustration, a detailed illustration on cash budget. Illustration number 6. Okay, understood? Now, so this was learning objective number 1.
प्रिपेरेशन ऑफ कैश बजट। अच्छा, जिसको भी ये स्क्रीनशॉट लेना हो, दे कैन क्विकली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6। 5, ओके, सितंबर का राइट हैंड साइड में है। ओके, फर्स्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट अबाउट द लाइन आइटम्स का नेम्स। रिसिप्ट्स में कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इन 5, 4, 3, 2, 1। Then we'll go to the payment side. First, take the screenshot of line items. And then you can take screenshot for amounts. Okay. 5, 5, 4, 3, 2, 1. This is closing cash balance. 5, 4, 3, 2, 1. Then we have working note number 1, collection from debtors. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Collection from debtors continued. दो थे ना, 75% और 25%। 5, 4, 3, 2, 1, go. Working note 2, calculation for payments. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Working note 3, calculation of interest payments. 5, 4, 3, 2, 1. Done, everyone. So I hope everyone followed, understood illustration number 6, which was nothing but our learning objective number 1, preparation of cash budget. Now let's move to learning objective number 2, understanding of cash management models. Cash management models. ठीक है, सो उसमें नंबर 1 वी विल अंडरस्टैंड विलियम जे बॉमल मॉडल। So what William J. Baumol is trying to explain, he is trying to give you the amount of optimum cash balance that company should keep with itself. Understanding means अभी जो illustration 6 में 20,000 आया था ना, minimum desired level of cash balance. So that desired level of cash balance is given through some technique, through some formula by William J. Baumol. मीन्स कंपनी को एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कितना कैश बैलेंस रखना चाहिए। अगर कंपनी अपना गल्ला चेक करे, उसमें कितना कैश बैलेंस होना चाहिए, कैश बैंक बैलेंस है, कैश इंक्लूड्स बैंक एज वेल। दैट इज व्हाट विलियम बॉमल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। व्हाट इज द ऑप्टिमम, द बेस्ट डायट फॉर द कंपनी एज फार एज कैश बैलेंस इज कंसर्न। क्लियर एवरीवन? सो विलियम जे बॉमल हैज duplicated the entire concept of EOQ. आपने EOQ में जो फॉर्मूला सीखी थी ना, 2AO/C, the under the square root. A was annual requirement of inventory. O was ordering cost. C was carrying cost of inventory. And the whole under the square root, under the root, we get optimum economic order quantity. Means this is the optimum ordering quantity for your inventory. तो यहाँ पे ऑर्डरिंग इन्वेंट्री नहीं, यहाँ पे ऑर्डरिंग सॉरी ऑप्टिमम इन्वेंट्री नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमम कैश बैलेंस चाहिए। सो ऑप्टिमम कैश बैलेंस गिवन बाय सेम ऑथर, सेम स्कॉलर, सेम मास्टर, विलियम जे बॉमल,
formula is 2AT upon I. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट. Economic order quantity was that order quantity where your ordering cost per order and carrying cost was same. Yes or no? And lowest. यहाँ पे optimum cash balance is that cash balance where your transaction cost per transfer and your opportunity cost of interest is same and lowest. ठीक है. So logic you have already understood in EOQ कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जिसमें सेम होता था, जिस लेवल पे सेम होता था, दैट वाज द बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी. यहाँ पे भी सेम, जिस बैलेंस में, जिस कैश बैलेंस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम रहेंगे, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्टिमम कैश बैलेंस. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज नथिंग बट योर एनुअल cash requirements. In EOQ, A was annual inventory required. यहाँ पे annual cash required. T is nothing but transaction cost per transfer. अब ये क्या होता है, मैं exactly ये क्या होता है, I will explain you. What is transaction cost? Inventory का ordering cost is transaction cost in cash. Because cash को हम order नहीं कर सकते. And I is nothing but opportunity interest और ROI. ठीक है, opportunity cost बोलो, ROI बोलो, interest बोलो, it is one and the same. For inventory, cost is carrying. We need to store inventory. Those storage cost was becoming carrying cost. यहाँ पे कैश को उठाने का खर्चा वुड बी इट्स आरओआई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है ना. अब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, लेट्स टेक 5 minutes and understand what it is and you will get entire clarity. See what William Baumol is trying to say. Let's say example, the optimum cash balance after applying above formula comes to 50,000 rupees. So at any given point in time, कंपनी के कैश बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस शुड बी 50,000. नाउ इफ आई काउंटर क्वेश्चन, आई कॉन्ट्राडिक्ट कि नहीं भाई 85,000 रहता है तो क्या, लेट्स से एज ऑन टुडे आज का कैश बैलेंस 85,000 है, तो विलियम जे बॉमल इज सेइंग नो, यू हैव टू कीप 50,000. सो आई एम आस्किंग व्हाट शुड आई डू विद द बैलेंस 35,000 देन. ये सरप्लस 35,000 है, उसका क्या करूं. So can I say I need to invest that somewhere else? Means कंपनी के बैंक अकाउंट से ये पैसा निकालना पड़ेगा और I need to transfer it to investment account. Yes or no? Correct. So if I transfer, if I shift this 35,000 from my company's account to investment account, can I say some transaction cost आएंगे. Let's say for example we invested this in stock market. ये तो कहना है ब्रोकरेज कॉस्ट लगेगा, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, टर्नओवर टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा. सो दिस ऑल इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड टू इन्वेस्ट दिस 35,000. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? अंडरस्टैंडिंग? दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट. क्लियर? अच्छा, मान लो 50,000 is the optimum cash balance, but now other scenario, I just have balance of 35,000. क्लियर? ये तो अब क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ट्रांसफर करना पड़ेगा कंपनीज बैंक अकाउंट. yes or no? So again some transaction cost will happen. So now कहना इसे मुझे अब इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ करने पड़ेंगे, लिक्विडेट करने पड़ेंगे, बट उसमें भी सर ब्रोकरेज तो लगेगा ही, उसमें भी एसटीटी तो लगेगा ही, उसमें भी जीएसटी तो लगेगा ही. Understood? So that all comes under transaction cost. Transaction cost to transfer the money to and fro from company's bank account to investment account. Understood? That is transaction cost. ठीक है, इधर से उधर करना पड़ेगा ना, again and again I have to do. Clear? To maintain the balance of 50,000. That is transaction cost. I hope it is clear to all the students. Transaction cost क्या होता है, अगर
आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इफ यू आर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम कंपनीज कैश एंड बैंक बैलेंस टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर तो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेंगे. अगर यू आर लिक्विडेटिंग, सेलिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट and transferring that money to company's cash and bank balance account, again you have to incur some transaction cost for these transfers. Clear? अच्छा, now what is ROI? क्या है? Opportunity cost. Opportunity cost of investment. ठीक है, ROI बोलो, opportunity cost of बोलो, interest बोलो, it is one and the same. Now, what William Baumol is trying to say, see, if you are keeping this 50,000 with you in the form of cash, can I say you are losing an opportunity to earn something, to earn some return from this 50,000 somewhere else? अगर ये आप 50,000 कंपनी के कैश बैंक बैलेंस में नहीं रखते, तो can I say you would have invested this 50,000 somewhere else? You would have earned some return from that somewhere else, be it gold, real estate, anything, stock market. But since you have kept this money with company in its cash and bank account, can I say you are losing an opportunity to earn some return on this 50,000. So that is storage cost of cash. Are you following? Cash को उठाने का खर्चा क्या है? Losing an opportunity to earn some return from that cash balance. Understood? इन्वेंट्री में इन्वेंट्री को उठाने का खर्चा क्या है? स्टोरेज, जगह चाहिए, रेंट, स्टोरेज कॉस्ट. कैश को उठाने का खर्चा, लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न फ्रॉम दैट इन कैश बैलेंस. अंडरस्टूड? सो आई इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट बोलो, आरओआई बोलो, इट इज वन एंड द सेम. ठीक है, क्लियर? अगर हम 50,000 खुद के लाते तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मान लो अगर हम 50,000, लेट से कंपनी में 50,000 तो रखना है, लेट से हम बोरो करके लाए, खुद के पास तो पैसा नहीं है, बोरोइंग करना पड़ेगा 50,000 एंड नीड टू कीप इन द कैश बैंक बैलेंस ऑफ कंपनीज अकाउंट. ठीक है, कैश एंड बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी. तो 50,000 हम कहीं और से बोरो करके लाए तो बोरोइंग के सामने इंटरेस्ट आएगा, खुद के पैसे डाले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? सो in short, to calculate optimum cash balance, as per William Baumol, you have to simply apply that formula you have learned in material costing, 280 upon I. हाँ, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे. स्टोरेज कॉस्ट विल नॉट कीप कैश इन गो डाउन, तो उसका कोई रेंट वगैरह एक्सपेंस नहीं होगा. कैश को उठाने का खर्चा क्या होता है? लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न सम रिटर्न फ्रॉम दैट कैश बैलेंस. फॉलोइंग? अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैश हम ऑर्डर नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे या इन्वेस्टमेंट नया करेंगे, तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है. क्लियर? बट इन शॉर्ट यू हैव टू अप्लाई दिस सेम फॉर्मूला. क्लियर? एंड दिस सेम फॉर्मूला, हाँ, इन मॉड्यूल, सी आंसर वुड कम सेम, बट उन्होंने जो डिनोशन किया है ना, द टर्मिनोलॉजीज दैट दे हैव यूज्ड इज, लेट मी शो यू. The terminology that they have used is, आ गया भाई विलियम बॉमल, हाँ, यूपी अपॉन एस. ठीक है, जस्ट अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड, कॉन्सेप्ट सेम, मीनिंग से आंसर सेम. क्लियर? सो यू फॉर देम इज एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, मेरे में ए इज एनुअल कैश रिक्वायरमेंट. P for them is transaction cost per transfer. For me, T is transaction cost per transfer. S is opportunity cost. I took I as opportunity cost. ठीक है? Meaning same, concept same, just a different pet name. Clear? मैं मेरे दोस्त को राजू बुलाऊं, वही सेम दोस्त को आप रामू बुलाओ, but person is same. Features of that person are same. Clear, everyone? Okay, so now let's see if there are some practical illustration on William J. Baumol, and let's solve that. We have illustration number 10. Illustration number 10 is on William J. Baumol. Okay, so let's see.
The firm maintains separate account for cash disbursement. Okay. It means they are trying to say cash and bank balance account of company is different, investment account is different. Total disbursements are 1 lakh 5,000 per month or 12 lakh 60,000 per year. A means total cash requirement, annual cash requirement of the company is 12 lakh 60,000. ये तो ही डिसबर्स करेंगे ना, वरना डिसबर्स क्यों करेंगे अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो. सो टोटल कैश required annually is 12 lakh 60,000. So this would be my A in the formula. Okay. Administrative and transaction cost of transferring cash to and fro is 20 per transfer. So can I say my transaction cost means T? Transaction cost T per transfer, it is how much? It is rupees 20. Means this 20 includes all brokerage, all GST, STT, turnover tax, everything. Okay? Per transfer. And my I, opportunity cost. I. Or you can denote it by O. O इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि because students get confused O with ordering cost of inventory. इसलिए मैं O नहीं लिखता, मैं I लिखता हूं. Marketable securities yield 8% per annum. It means if we are keeping this cash with company, then we are losing an opportunity to earn 8% from market. Are you following? So my opportunity lost is 8%. 8% means 0.08. क्या पूछा है? What is the question all about? Determine optimum cash balance according to William J. Baumol. If they specify William J. Baumol, use the formula. Clear everyone? मान लो इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है, but reading at the question, we can make it out that this is on William J. Baumol. Clear? So first, how to solve? First, write the formula. According to William J. Baumol, optimum cash balance is nothing but 280 upon I, the whole under root. Clear? 2. Annual requirement is, I guess, annual cash requirement is 1260. Transfer, transaction cost is 20 rupees per transfer. Opportunity lost is 8%, means 0.08. So if we solve this on Cal C, 2 into 1260 into 20 divided by 0.08. 630 000 So 630 wait, कुछ गड़बड़ हुई. $630 000 25,100. So this is the optimum cash balance that company should keep with itself at any given point in time. मतलब कंपनी का कैश बैलेंस इतना तो होना ही चाहिए. कैश बैंक बैलेंस 25,100. ठीक है. मान लो 30,000 रहता है तो नो, ट्रांसफर इट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अच्छा 15,000 रहता है, 5,000 लेके आओ. अंडरस्टूड? यस, 25,100. Clear everyone? So this is the optimum cash balance. Means if you see William Baumol is trying to say bhai rakhna ho to you have to keep 25,100. But now see, now William J. Baumol model understood everyone, how to solve understood. If you want to take screenshot, quickly take.
there is some one disadvantage of this model. So मैं समझाता हूँ क्या है. Okay, 5 4 3 2 1. 5 4 3 2 1. 5 4 3 2 1. Now see what William Baumol is trying to say. कंपनी तुझे बैलेंस रखना है तो यू हैव टू कंपल्सरीली कीप दिस बैलेंस, अदरवाइज यू विल गो इन लॉस. ठीक है. मींस टुडे 16 जुलाई, इफ यू ओपन 16 जुलाई कैश बैंक बैलेंस अकाउंट, इट शुड बी 25,100. Okay, let's say 10th October. If you open cash and bank balance account of 10th October, it should be 25,100. So this is how rigid William Baumol model is. At any given point in time, it should be 25,100. Hey, but can I say company ka cash requirement fluctuates upon its needs? Yes or no? Maybe during season time, बैलेंस ज्यादा चाहिए क्योंकि खर्चा ज्यादा लग सकता है. ऑफ सीजन बैलेंस रिक्वायर्ड शुड बी लो बिकॉज सीजन नहीं है, यू शैल कीप लेस बैलेंस. नहीं, बट विलियम बॉमल इज सेइंग सीजन हो या ऑफ सीजन हो, यू हैव टू मेंटेन 25,100. क्लियर? रिजिडिटी. सो दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल. पकड़ के एक अमाउंट होल्ड करके चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग. बट कैश एंड बैंक बैलेंस आइडियली शुड फ्लक्चुएट depending on the needs of company, depending on the business cycle of the company, depending on the seasons of business of the company. Are you following? During on season, Diwali time, you would need more cash. Why? Because खर्चा ज्यादा हो सकता है, business ज्यादा है तब. During off season, let's say if you are into business of air condition, तो winter season is off season for AC, तब खर्चा कम है. ठीक है. सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू वुड नीड 25,100 ओनली. आर यू फॉलोइंग? एट दैट टाइम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड मे बी लेस. आर यू फॉलोइंग? सो टू रिजॉल्व दिस इशू, मिलर एंड और मॉडल कम्स इनटू द पिक्चर. ठीक है. बीच में कौन आता है? मिलर एंड और. सो मिलर एंड और आर ट्राइंग टू से कंपनी, यू फर्स्ट सेट द रेंज, हायर रेंज लोअर रेंज ऑफ कैश बैलेंस. आपको मैक्सिमम कितना कैश लगेगा, सेट दैट हायर रेंज फर्स्ट, हायर लिमिट. आर यू फॉलोइंग? अब सर प्रैक्टिकली हायर लिमिट सेट कैसे होती है? तो इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट ट्रेंड्स. ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स कंपनी का हायर कैश बैलेंस सीजन टाइम पे, ऑफ सीजन टाइम पे कितना रहा है, ये सब एक्सपीरियंस से पता चलता है कि व्हाट शुड बी द हायर range of the cash balance that company should keep. Likewise, based on past trends, past experiences, you decide the lower limit of the cash. Are you following? देखो, आपको ऑफ सीजन में सबसे कम कितना पैसा लगा था, व्हाट वाज द लोअर रेंज ऑफ योर कैश रिक्वायरमेंट. आर यू फॉलोइंग? डिसाइड दैट, seeing the past trend, seeing the past experiences, or maybe based on the future planning as well. ठीक है. ये सब फैक्टर्स कंसीडर करके आप लोअर रेंज हायर रेंज सेट करो, एंड योर कैश बैलेंस शुड ऑलवेज फ्लो विद इन दिस रेंज. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? सर मान लो हायर रेंज, दिस इज योर हायर रेंज. लेट्स से यू केप्ट अ हायर रेंज ऑफ 60,000 and your lower range, let's say it is 10,000. So your cash balance should always flow, should always lie between 10 and 60,000. ठीक है. इसके बीच घूमना चाहिए, इसके बीच फ्लक्चुएट होना चाहिए. नो नीड टू बी रिजिड कि 25,100 ही चाहिए. नो, इट कैन फ्लक्चुएट एनीवेयर बिटवीन 10 and 60,000. ठीक है. अंडरस्टूड? दिस इज द रे, दिस इज मिलर एंड और मॉडल. मिलर एंड और is trying to explain that company keep the higher range, keep the lower range. Your cash balance should fluctuate between this lower and higher range. But what if it goes above higher range? So Miller and Orr is trying to explain the excess you should invest in short-term investments. ठीक है. Park in the investments. ठीक है. So temporary investment, excess टेम्पररी इन्वेस्टमेंट में पार्क कर दो एंड ब्रिंग डाउन टू हायर रेंज. ठीक है.
Okay, what if it goes below the lower range? Then either borrow or liquidate the investment. Clear? This is what Miller and Orr is trying to explain through their model. So don't be rigid. Don't keep a specific single amount of cash and bank balance based on your past trends, based on your past experiences of cash requirements, based on future needs, future planning. You set higher and lower range. And your optimum cash balance should always lie between this range. Okay? If in case it goes above the higher range, park it in short-term investment. If it goes below the lower limit, liquidate the investment or borrow the funds, but your optimum cash balance should be within this range of 10 and 60. Okay? 10 and 60 is the example that I've given up, not a standard rule. बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स पकड़ लेते सर ने तो 1060 बोला था, दिस इज द ऑप्टिमम कैश बैलेंस एज पर मिलर, और नहीं ऐसा नहीं है, दिस इज अ जनरल एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड रूल नहीं बनाना इसको. ठीक है, सो दिस इज मिलर और completely. See, Miller or is saying net cash flow is completely stochastic. Stochastic means fluctuating. You cannot decide कि भाई आपको at any given point in time you would need 25 100 only. Off season less cash balance required. On season high cash balance required. ठीक है? This is what Miller and Orr is trying to say. Upper limit, lower limit. Clear, everyone? So if you want to take a note on this as well, Miller and Orr model, you can just take the screenshot of this Miller and Orr. This is diagrammatic explanation of Miller and Orr model. There are no practical problems on Miller and Orr. It is just a theoretical concept. Okay, students, if you want to take screenshot of this, quickly take in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. So understood? So with this, we complete component of cash. See, we are under management of working capital umbrella. वो umbrella मत भूलो, हम कौन से छाते के नीचे खड़े हैं? Working capital umbrella. अब उसमें छोटे छोटे और छाते हैं. छाता नंबर 1 receivables management done. छाता नंबर 2 cash component done. Managing the cash done. Are you following? छाता नंबर 3 we will learn about payables management. छाता नंबर 4 other paper, वो दूसरे छाते में. Other paper means costing paper में, about inventory management. Clear? So now let's understand the concept of component of creditors. Managing your creditors. Financial management में एक saying है. If you sell well, you should buy well as well. Buy well means उसका पेमेंट भी आपको सी पेबल्स मैनेजमेंट कैसे पता है? यू हैव टू डिसाइड कि क्या हम पूरा क्रेडिट यूटिलाइज करें दैट इज गिवन बाय द सप्लायर टू अस, या जल्दी पेमेंट करें या पेमेंट और डिले करें. ठीक है, दिस इज व्हाट पेबल्स मैनेजमेंट विल कवर. क्या कंपनी को क्रेडिट पीरियड पूरा यूटिलाइज करना चाहिए, मींस कंपनी शुड पे ऑन द लास्ट डे ऑफ द क्रेडिट पीरियड, और कंपनी शुड पे लिटिल अर्ली एंड गेट सम कैश डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर्स, और कंपनी को पेमेंट ही नहीं करना चाहिए और डिले करते रहना चाहिए. ठीक है, हे बट नो वन विल टीच यू कि भाई क्रेडिट पीरियड और डिले करते जाओ. इट इज अनएथिकल, नॉट प्रिंसिपली करेक्ट. You will save some cash for that much day, that is correct. But can I say it will hamper your credit image in the market? Supplier क्या बोलेगा? Don't do business with Dweep. Yes or no? Because credit period 60 days था, आज 100 days हो गया, फिर भी उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है. Are you following? So stop doing business with Dweep. ये मैसेज मार्केट में फैल जाएगी that Dweep is not doing payment on timely basis, so it will hamper your credit image. ठीक है, so this we have to ignore in this chapter. Ignore means we will either
on the last day or we will either pay early. ठीक है, we cannot lag the payment more than the period allowed by the supplier. Are you following? Because it hampers the credit image. तो ऐसा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाएंगे नहीं जिससे आपकी क्रेडिट हैम्पर हो. क्लियर? यू ऑल आर हैविंग होल्डिंग अ बिग वैल्यू टू अस. ठीक है, योर फ्यूचर सीएस आपकी एक वैल्यू है. सो ऐसा कुछ भी नहीं सिखाएंगे जहां आपकी वैल्यू कम हो. क्लियर एवरीवन? सो पेबल्स मैनेजमेंट में व्हाट इज आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव? ये स्टोरी में लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक ही है कि वेदर वी हैव टू डिसाइड. सी मैनेजमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. हाँ, उसमें डिसीजन लेना होता है. मैनेजमेंट क्या करती है? डिसीजन लेती है. सो व्हाट डिसीजन वी हैव टू टेक? वेदर टू अवेल फुल क्रेडिट पीरियड. ए अवेल फुल क्रेडिट पीरियड मींस क्या लास्ट डे पे पेमेंट करना चाहिए? पेमेंट ऑन लास्ट डेट और पे अर्ली. ये अर्ली पेमेंट करेंगे तो कुछ कैश डिस्काउंट मिलेगा. टेक कैश डिस्काउंट. किसमें कंपनी का फायदा ज्यादा है? व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? वेदर टू पे अर्ली एंड अवेल द कैश डिस्काउंट और रिफ्यूज द कैश डिस्काउंट एंड पे ऑन द लास्ट डे. तो जिसमें फायदा benefit ज्यादा we will go for that. Understood? This is what we have to learn in this payables management. Clear everyone? And to understand payables management with better clarity, let's directly take the illustration. We will consider illustration as our example and we will learn the concept of payables management. ठीक है, illustration बोलो, example बोलो, that would be one and the same. So everyone come to यूनिट नंबर. सी हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, कैश मैनेजमेंट हो गया, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट हो गया, पेबल्स मैनेजमेंट हो जाएगा, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी एक्सप्लेन. यूनिट नंबर 3 इन्वेंट्री मैनेजमेंट यू हैव लर्नड इन कॉस्टिंग पेपर. ठीक है, सो आज एफएम एज फार एज मॉड्यूल 2 इज कंसर्न वुड बी कंप्लीटेड. क्लियर? आज एफएम का आखिरी लेक्चर है. Okay, so let's come to illustration 17, but let me note illustration 17 here in the slide. Okay, so I'm just twisting some amounts from illustration 17. So let's say our purchase, हमारा सेल वैल्यू नहीं है ना, वी आर अ कस्टमर ऑफ समवन. ठीक है, मीन्स अब हम खरीदी करेंगे. सो लेट्स से परचेज वैल्यू इज ₹100. ठीक है, ओके. द क्रेडिट ऑफर्ड बाय सप्लायर इज 2/10 नेट 45. सो क्रेडिट allowed by supplier, credit allowed by supplier is how much? 2/10 net 45. I have explained you how to read such term 2/10 net 45 in my very first session. मैंने ये सॉरी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में मैंने ये समझाया था. 2/10 net 45 मतलब क्या? So it means normal credit period allowed by supplier is 45 days. मतलब अगर आप डिस्काउंट नहीं लेते तो आपको कौन से डे पे पेमेंट करना है? 45th डे पे. बट इफ यू मेक द पेमेंट ऑन और बिफोर 10th डे you will get 2% discount. Are you following? This is how you read 2/10 net 45. Clear? Another example, 1/15 net 30. How will you read this? So normal credit allowed is 30 days. मतलब अगर आपको जल्दी पेमेंट नहीं करना है तो you pay on the 30th day. But if you make the payment on or before 15 days, either on the 15th day or before that, you will get 1% discount on your purchase value. Clear? This is how you read 2/10 net 45, 1/15 net 30. Okay. So from this I can make out कि अगर मैं 45th day पे पेमेंट करता हूं तो I have to pay entire ₹100. Correct?
बट अगर मैं पेमेंट 10th डे पे करता हूं तो मुझे 100 रुपया नहीं भरना है, 98 रुपीज, 2% डिस्काउंट मिलेगा ना, सो आई हैव टू पे 98 रुपीज ओनली. क्लियर एवरीवन? ओके, मूविंग अहेड. Okay, let's assume ROI of 25% and decide whether company should avail the cash discount. That is, if company is availing the cash discount, can I say उसको 10th डे पे पेमेंट करना पड़ेगा, और refuse the cash discount. If company refuses the cash discount means अब आखिरी दिन पे पेमेंट होगा. क्लियर? सो वी हैव टू डिसाइड कि क्या 10th डे पे पेमेंट करना अच्छा है या 45th डे पे पेमेंट करना अच्छा है. दैट डिसीजन मेकिंग वी हैव टू सी अंडर दिस इलस्ट्रेशन. ठीक है? ओके, सो नाउ ओके, नाउ हाउ टू प्रोसीड. लेट्स गो लॉजिकली. ठीक है? लेट्स से दिस इज अ टाइम लाइन. दिस इज 0 डे. दिस इज 2/10 नेट 45 ना, सो नॉर्मल क्रेडिट इज 45 डेज. ठीक है? सो दिस इज 45th डे. एंड अगर जल्दी पेमेंट करते हैं मीन्स 10th डे पे पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है? सो दिस इज 0, 10, 45. ओके, सो नाउ आई एम आस्किंग, जस्ट विजुअलाइज दिस इन अ स्टोरी फॉर्मेट. हे सप्लायर, यू गिव मी क्रेडिट ऑफ 45 डेज. ठीक है? आई हैव बॉट गुड्स वर्थ ₹100 फ्रॉम यू. Purchase value is 100. ठीक है? Okay, so you have given me credit of 45 days. So if I make payment on 45 days, मुझे कितना पेमेंट करना होगा? सप्लायर सेइंग पागल हो गया है क्या? 100 की खरीदी की है तो 100 ही पेमेंट करना पड़ेगा ना ऑन 45th डे. ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? ओके, परफेक्ट. नाउ आई आस्क यू, सी यू गेव सम टर्म्स 2/10 नेट 45. तो 10वें दिन में मैं पेमेंट करूं तो हाउ मच आई नीड टू पे? तो सप्लायर सेइंग you will get 2% discount on the purchase value. So it means, can I say I have to pay 98? Supplier say, yes, obviously, if you make payment on 10th day, you have to pay 98. Now I am questioning the supplier as a layman. So why you are charging 2 rupees extra if I make the payment, if I delay the payment for 35 days? 45 या 35 डेज सी आप पेमेंट कर रहे हो 10th डे पे, तब 98 रुपीज कर रहे हो. एंड आई एम आस्किंग द सप्लायर, इफ आई मेक द पेमेंट ऑन 10th डे, यू आर टेकिंग 98 फ्रॉम मी. If that same payment I make after 35 days, that is on 45th day, you are charging 100 rupees. Why such bhedbhav you are doing? So for us to understand in layman terms, we feel that we are getting discount of 2%. But ideally वो क्या है पता है? It is hidden interest. This 2 rupees, supplier is charging us interest on 98 rupees. Are you following? For utilizing it for 35 days. ठीक है? ये 2 रुपया वो 35 दिन का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ऑन 98 रुपीज. हाँ, समझने के लिए हमें क्या लग रहा है? वी आर गेटिंग 2% डिस्काउंट. But FM students, now you understand that is not technically a discount. He is charging us implied interest on 98 rupees for 35 days. ठीक है? वो 2 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए मांग रहा है क्योंकि हम 35 दिन बाद पेमेंट करने वाले हैं. तो भाई आई वुड नीड 2 रुपीज एक्स्ट्रा ऑन 98. आर यू फॉलोइंग? सो दैट इज implied interest, hidden interest, जो आज तक हमें नहीं पता था. हम आज तक क्या समझते थे? That is cash discount, that oh discount मिल रहा है, discount, wow, take it. But ideally it is nothing but supplier is charging hidden interest for providing you this excess credit of 35 days. Are you following? 10th डे पे वो पैसा लेता तो 98 ही लेता. वही सेम पैसा अगर हम और 35 दिन डिले करते हैं so he's charging extra 2 rupees. So hidden interest he is charging from us. Are you following everyone? That is implied interest means to take the credit, additional credit of 35 days. Can I say
supplier is charging rupees 2 of interest on 98 rupees. Yes or no? ये 2 रुपया इंटरेस्ट किस पे चार्ज हो रहा है? 98 पे चार्ज हो रहा है. एक्स्ट्रा किस पे ऐड हो रहा है? 98 पे ऐड हो रहा है. सो कैन आई से दिस 2 डिवाइड बाय 98 इंटू 100, 2.04%, 0408% जो आया. सप्लायर इज चार्जिंग हिडन इंटरेस्ट फॉर 35 days. आर यू फॉलोइंग? उसने 2.0408% इंटरेस्ट वसूला है हमसे, और हमें क्या लग रहा है? हमें 2% डिस्काउंट मिला. ए नाउ इफ एनीवन सेज टू यू कि भाई सप्लायर इज गिविंग 2% कैश डिस्काउंट, ए दैट इज फॉर लेमैन. लेमैन को इतना टेक्निकल नहीं समझता. सो इन इजी लैंग्वेज भी एक्सप्लेन कि भाई आपको 2% डिस्काउंट दिया, जल्दी पेमेंट करो. अगर लेट पेमेंट करते हैं तो कहना है इज चार्जिंग अस 2.0408% of interest. That is for only 35 days. Are you following everyone? So हमें क्या लगता है? ट्रेड क्रेडिट till the 45 days, the credit that we use is free of cost. ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना. I told you not a single rupee in financial management or in the business comes free of cost. Why will someone give you credit of 45 days without charging anything? इतना कोई भी दयावान, कोई भी डोनर, कोई भी दयालु नहीं है इस दुनिया में. इफ दे आर डूइंग बिजनेस एंड फॉलोइंग, हाँ चैरिटी पर्पस के लिए बिजनेस खोल के रखा है, देन दे विल गिव यू फ्री क्रेडिट फॉर 45 days. ठीक है. हमें क्या लगता है कि ट्रेड क्रेडिट दैट वी गेट फ्रॉम सप्लायर इज फ्री ऑफ कॉस्ट. नो, बट देयर इज सम हिडन इंटरेस्ट, इम्प्लाइड इंटरेस्ट. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? आज पता चला हमें. क्लियर? हाँ, जस्ट फॉर लेमैन पर्पस भी से 2% इज कैश डिस्काउंट. दैट वाज फॉर लेमैन अंडरस्टैंडिंग एंड जनरल मार्केट प्रैक्टिस. आर यू फॉलोइंग? बट आज हमें पता चला कि भाई इसमें छुपा हुआ है राज. कौन सा राज? इंटरेस्ट का राज. क्लियर? जिसको हम इम्प्लाइड इंटरेस्ट बोलेंगे. अंडरस्टूड? सो दिस इज फॉर 35 days ओनली. सो इसको हम एन्युअलाइज करें तो हाउ मच एन्युअलाइज्ड this interest would have cost to us? ये इंटरेस्ट एनुअली हमें कितने में पड़ा होता? तो 2.0408 इंटू 365 डिवाइड बाय 35, 21.2826% पर एनम. इट मीन्स हम अगर सप्लायर से क्रेडिट ले रहे हैं ना, क्रेडिट मीन्स उधारी पे जो पैसा ले रहे हैं ना, वो हमें पूरे साल 21.286% में पड़ रहा है. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? अंडरस्टैंडिंग? अगर मान लो बैंक में वर्किंग कैपिटल लोन हमें 10% में मिले तो कहना है से हमें बैंक से लोन ले लेना चाहिए एंड वी हैव टू पे द सप्लायर अर्ली. ठीक है? बिकॉज क्रेडिटर से लोन उधारी मांग रहे हैं 35 दिन की, वो 21.2826% में पड़ रहा है. तो अगर वही उधारी हम बैंक से लेते हैं तो 10% में पड़ रहा है. तो कहना है से वी शुड डू व्हाट? टेक लोन फ्रॉम द बैंक, pay to the supplier early. Why to pay unnecessary interest of 21.28% annually to the supplier? Are you following everyone? Hope this is clear. So this is analyzing, evaluating payables management from aspect 1. ठीक है. अब दूसरा एस्पेक्ट भी है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. दिस वाज फ्रॉम बोरोइंग एस्पेक्ट. ठीक है. अगर बोरोइंग रेट मार्केट में इससे कम है तो मार्केट से बोरो करो, सप्लायर को जल्दी पे कर दो एंड निकल जाओ. व्हाई यू आर अननेसेसरी टेकिंग उधारी फ्रॉम सप्लायर एंड ही इज इन टर्न चार्जिंग 21.286%. क्लियर? बाहर से उधार ले लो, 10-12% में मिल रहा है. क्लियर? सो दिस इज एस्पेक्ट 1. एस्पेक्ट 2 फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव. लेट्स से your ROI, your opportunity cost is 25%. Means now another aspect. If you do not pay 98 rupees on 10th day, it means ये आप 98 rupees आपके जेब में रहेगा as it is. Clear? Because आपने तो 10th day पे पेमेंट नहीं किया है. So this 98 would be in your pocket. ठीक है? On 10th day. Still you have 35 days more because अब हम पेमेंट करेंगे 45th day पे. Clear? So you can invest this 98 for another 35 days
एंड जहां पे भी आप ये 98 रुपीज इन्वेस्ट करो, वहां से आपको मान लो रिटर्न 25% मिल रहा है। तो कहना है से बाहर से आप 25% कमाओ एंड उधारी आप 21.286% चुकाओ, तो नेट फायदा हो रहा है। क्लियर? सो इन दैट केस you don't pay the amount of 98 early, you keep it with you, still you have 35 days left, so invest outside for 35 days, and from that outside you are able to earn 25%। तो कहना है से अगर उधार पे पैसे लेते हैं 21.286%, वही पैसा अगर बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो कमाते हैं 25%। तो वेदर ये बाहर इन्वेस्ट करो एंड उधारी ले लो, आर यू फॉलोइंग? उधारी फ्रॉम whom? उधारी फ्रॉम सप्लायर, स्टिल यू आर इन नेट बेनिफिट पोजिशन। Are you following? It is something like this. You are taking a loan from bank at 9%. So you are paying home loan interest of 9%. ठीक है? Means you have taken a loan. लोन लिया मीन्स अब आपके पास खुद का पैसा पड़ा हुआ है। खुद का पैसा यू कैन इन्वेस्ट आउटसाइड एनीवेयर, बीट इन गोल्ड, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, एनीवेयर। सो खुद के पैसे से आप मान लो म्यूचुअल फंड से 15% कमा सकते हो। तो why to pay early? Why to invest my? Why to buy the home from my own fund? बैंक से 9% लो, लोन लो, लोन से घर खरीदो, ठीक है? You pay interest every year 9%, and now अगर आप खुद का घर लेते मीन्स खुद का पैसा जाता, सॉरी खुद का घर लेते खुद के पैसों से, लोन नहीं लेते तो खुद का पैसा चला जाता, so you would have lost the opportunity to earn 15%. But since you have taken a loan, that fund is now with you in your pocket. खुद का पैसा खुद के पास ही पड़ा है, तो अब डालो म्यूचुअल फंड में एंड earn 15% and pay 9% interest. Clear everyone? So वैसा situation. Understanding everyone? So can I say one aspect is, if implied interest rate is less than your ROI, opportunity cost, ठीक है? मीन्स बाहर आप 25% कमा सकते हो एंड योर इम्प्लाइड इंटरेस्ट रेट, द सप्लायर, द उधारी दैट सप्लायर इज गिविंग टू अस इज जस्ट 21%। तो कहना है से भाई बाहर कमाओ, अच्छा कमाओ, खुद के पैसे क्यों जल्दी पे कर रहे हो? बाहर इन्वेस्ट करो, बाहर इन्वेस्ट रखो, 25% कमाओ एंड यू पे 21%। अरे फॉलोइंग, सो इन दैट केस कहना है से आवर डिसीजन वुड बी refuse the discount. Are you following? Refuse the discount means pay on the last day. Pay on the last day. And till that time, you invest this amount outside and earn 25%. Are you following everyone? On the contrary, if implied interest charged by supplier, जो छुपा हुआ इंटरेस्ट है ना, जो राज था, is more than ROI. A means बाहर आप 15% ही कमा पा रहे हो एंड यू आर पेइंग 21% एज उधारी का इंटरेस्ट टू सप्लायर, तो डोंट रन दिस नुकसानी वाला बिजनेस। ये धंधा आपको नुकसान करके देगा। सो इन दैट केस यू टेक द डिस्काउंट, अवेल द डिस्काउंट एंड पे अर्ली टू द सप्लायर, एंड पे अर्ली टू द सप्लायर। एवरीवन अंडरस्टूड? सो इन शॉर्ट, हमें इस चैप्टर में डिसाइड करना है कि क्या कंपनी को पूरी उधारी एंजॉय करनी चाहिए या कंपनी शुड पे अर्ली। इफ कंपनी पेज अर्ली, then you would be losing out some investment opportunity from outside. So check that outside opportunity rate वो ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से या कम है, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड। Clear everyone? Understood? So now let's come to question number, illustration number 7. ठीक है? Okay, now sorry, not illustration 7, but continuing with my illustration above. So 2 by 98. 2 divided by 98 into 100.
2.04% फॉर 35 days। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना एन्युअलाइज करे तो 21.286%। मीन्स अगेन आई एम रिपीटिंग इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, अगर मैं सप्लायर से पूरा क्रेडिट पीरियड लेता हूँ, मीन्स उधारी पे माल खरीदता हूँ एंड एंजॉइंग फुल क्रेडिट पीरियड, देन वो उधारी मुझे कितने परसेंट पे पड़ रही है? 21.2826%। ठीक है, अब वही हम सोल्यूशन देखें तो सर 23.5% आ रहा है ए, बट नाउ to calculate implied interest rate there are two methods. The method that I have used above is approximation method. IRR में था ना, approximation method and IRR method. So the method that I have used above to calculate implied rate of interest charged by supplier is by approximation method. There is one more method called compounding method. Compounding method, time value of money concept, present value, future value वाला method. So if you see the module, there is two formulas. यहाँ पे भी देखो, can you see this formula? D upon 100 minus D into 365 divided by T. This is nothing but approximation formula. मैंने ये जो इंटरपोलेशन से किया है ना, 2/98 फॉर 35 days, तो 365 डेज के लिए कितना? सो दिस 21.26286%। ये हमने जो सॉल्व किया ना, यही आंसर आएगा इफ यू टेक दिस फॉर्मूला। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, 100 upon 100 minus D into 365 by T minus 1। बट लुकिंग एट द फॉर्मूला इट फील्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट लॉजिक मैंने समझाया क्या है। 35 डेज, तो 365 डेज के लिए कितना? दैट इज अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल ऊपर वाली। नाउ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला नंबर 2, कंपाउंडिंग मेथड। ठीक है, कंपाउंडिंग मेथड, इफ आई पे ऑन द 10th डे it is 98 and same future value, can I say this 98 at some rate of interest for 35 days is growing to 100 rupees? Yes or no? ठीक है, ये 98 का 100 हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू इज 98, फ्यूचर में दिस 98 इज बिकमिंग 100, दिस 98। सो यू हैव टू अज्यूम कि मान लो ये 98 रुपीज में आज इन्वेस्ट करता फॉर 35 डेज, ठीक है, एंड ये 98 का मुझे 100 बनाना होता, तो एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट आई वुड हैव इन्वेस्टेड? अंडरस्टूड? दैट इज फाइंडिंग इम्प्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग कंपाउंडिंग मेथड। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आज मैं 98 इन्वेस्ट करता, इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड 98 रुपीज टुडे and I would want to grow this 98 to 100 rupees after 35 days, then what would be the rate of interest? What would be the R? That is implied rate of interest का formula using compounding method. ठीक है everyone? So can I say 1 plus R, 35 by 365 comes to 100 divided by 98। ये 98 को ये साइड लेके गया, RHS साइड 1.0204। ठीक है, सो 1 प्लस R इज इक्वल टू 1.0204 रेस टू, सी दिस इज 35 बाय 365। ठीक है, बट अगर मैं ये 35 बाय 365 को साइड चेंज कर दूं तो कहना से ये चेंज हो जाएगा, 365 बाय 35 हो जाएगा। So 1 plus R comes to 1.0204 raised to 10.4286. ठीक है, so if you change the power from LHS to RHS तो वो उल्टा हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, so now I don't know whether you know or not how to solve this figure on Kelsey. If you don't know, I'm just quickly giving the steps how to solve the box
इन डायरेक्टली इन कैलकुलेटर विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, बाकी ये लॉग टेबल से कैलकुलेट होता है. बट इफ यू डोंट हैव लॉग टेबल, और इवन इफ यू हैव लॉग टेबल एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज लॉग टेबल, देन देयर इज अ टेक्निक टू सॉल्व दिस बॉक्स इन कैलसी. ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स है. तो स्टेप नंबर 1, टेक द बेस अमाउंट. टेक 1.0204 इन योर कैलसी. ठीक है, सो टेक द बेस अमाउंट. स्टेप 2, प्रेस स्क्वायर रूट साइन 12 टाइम्स. ठीक है, प्रेस स्क्वायर रूट साइन 12 टाइम्स, एग्जैक्टली 12 बार गिन के. हाँ, देन जो भी आंसर है उसमें से -1 प्रेस करो. -1 किया, सो -1 किया. नाउ मल्टीप्लाई विद द पावर. पावर क्या है? 10.4286. सो स्टेप 4, मल्टीप्लाई विद द पावर 10.4286. ठीक है, ये हो गया. देन जो भी आंसर है उसमें प्रेस करो +1. सो दिस इज स्टेप कौन सा आया? फर्स्ट, 1 2 3 4, 5th स्टेप. ठीक है, जो भी आंसर है 6th स्टेप, प्रेस मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स. This is 6th step. Press multiply equal to 6 times. Means 12 times. Means multiply equal to, this is 1 time. वैसे वापस multiply equal to second time, multiply equal to third time, multiply equal to fourth time. वैसे आपको 12 बार करना है. ठीक है, and after that if you calculate R, तो around 0.235 something आएगा, which is nothing but 23.5%. ठीक है, हाँ, कुछ वैल्यू आएगी 1 + R, यू विल गेट सम वैल्यू. ठीक है, वो वैल्यू में से -1 कर देना तो 0.235 आएगा. यू टेक 1 ऑन RHS, सो -1 हो जाएगा. सो R वुड बी 0.235 एंड इट वुड कम टू 20, क्लोज टू 23.5%. दिस इज हाउ यू सॉल्व इट ऑन कैलसी. सो ये आंसर आएगा. ठीक है, सो नाउ सी अगेन, इफ यू वांट टू नोट डाउन द स्टेप्स, नोट इट डाउन. This is steps to calculate amount on Calci without using log table. First, again I am repeating, step 1, take the base. Step 2, press square root sign 12 times. Exactly गिन के दबाने का. Then जो भी आंसर आए press -1. Step 3, फिर मल्टीप्लाई विद द पावर, रेस टू में जो भी अमाउंट है, जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करो. फिर +1 प्रेस करो एंड देन मल्टीप्लाई इक्वल टू, ऐसे 12 बार करो. ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले सारा मल्टीप्लाई 12 बार कर दिया फिर सारा इक्वल टू साइन 12 बार प्रेस किया, ऐसा नहीं. मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 टाइम्स. सो 1 + R, यू विल गेट सम वैल्यू, आई गेस 1.235 ऐसा कुछ आया होगा. फिर therefore R is equal to 1.235 - 1. So R is equal to 0.235, which is nothing but 23.5%. It means annually अगर हम करें compounding base पे, तो supplier is charging us 23.5%. Are you following? वही interest rate approximation में आ रहा था 21.42428%. Clear everyone? So this is how you calculate interest rate using approximation method और यूजिंग कंपाउंडिंग मेथड. सर एग्जाम में मेथड स्पेसिफाई नहीं करी हो तो क्वेश्चन में, तो यू कैन यूज एनी मेथड बिकॉज बोथ द फॉर्मूलाज आर गिवन, सो बोथ द मेथड्स आर एक्सेप्टेड. क्लियर एवरीवन? बट कंपाउंडिंग मेथड इज मोर लॉजिकल एंड मोर प्रैक्टिकल. ठीक है, बट इट इज ऑन यू विच मेथड यू वांट टू यूज. सो कैन आई से माय इम्प्लाइड इंटरेस्ट रेट that supplier is charging to me is 23.5%, and let's say my ROI outside is 25%. It means अगर मैं ये पैसा जल्दी नहीं चुकाता तो कहना है मैं ये पैसा बाहर इन्वेस्ट करता रहूंगा, तो बाहर इन्वेस्टमेंट से मुझे 25% मिल रहा है,
तो I can easily afford paying 23.5%. So it is better you refuse the discount. You refuse the discount, and it is better you pay later. Later means on the last day. ठीक है, उसमें आपका बेनिफिट ज्यादा होगा. सर एक बार चेक करके दिखाओ ना, नए बेनिफिट ज्यादा आ रहा है कि नहीं. ओके, लेट्स चेक, लेट्स कंपेयर. इफ आई रिफ्यूज द डिस्काउंट एंड इफ आई अवेल द डिस्काउंट. ठीक है, लेट्स चेक किसमें बेनिफिट ज्यादा आ रहा है. ओके, if I refuse the discount, means I have to pay entire rupees 100. Yes or no? So payment to supplier. अगर डिस्काउंट नहीं ले रहा हो तो you will say भाई लास्ट डे पे पेमेंट करो. ओके, लास्ट डे पे कितना पेमेंट करोगे? 100 rupees. So outflow would be 100 rupees. If I accept the discount, it means I am paying on the 10th day. So I have to pay 98 rupees. Correct? तो सर इसमें तो आउटफ्लो तो अवेलिंग डिस्काउंट में ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है ना, तो वी शुड सर अवेल द डिस्काउंट. बट वेट, स्टोरी हैज नॉट एंडेड येट. ठीक है, सो दिस इज इफ यू रिफ्यूज द डिस्काउंट, पे ऑन लास्ट डे, एंड इफ यू अवेल द डिस्काउंट, पे ऑन 10th डे. पे ऑन 10th डे. ठीक है सर, आउटफ्लो तो पे ऑन 10th डे में कम आ रहा है, तो व्हाई शुड वी रिफ्यूज द डिस्काउंट. बट वेट, सी इफ यू रिफ्यूज द डिस्काउंट, तो कैन आई से नाउ इन योर पॉकेट यू आर लेफ्ट विद 98 रुपीज. अगर 10वें दिन पे जाते तो ये 98 रुपीज चुका देते, पे कर देते, यू वुड हैव पेड दिस 98 ऑन 10th डे. बट सिंस यू हैव रिफ्यूज द डिस्काउंट, दिस मनी इज लेफ्ट विद यू इन योर पॉकेट. This money you can invest for another 35 days at 25%. Yes or no? So invest rupees 98 at 25%. 25% is ROI outside, huh? For another 35 days. Sir, 45 days क्यों नहीं, 35 days क्यों? ये कहने से आप 98 रुपीज 10th डे पे भरने जाते हैं, बट वो 10th डे पे नहीं भर रहे हो. Are you following? वो 10th डे पे आपके जेब में रहा है. So now only 35 days are left ना for the due date. Are you following everyone? So can I say if I invest 98 rupees at 25% for 35 days, I would have earned some return. So मैंने कितना कमाया होता, तो 98 into 25% into 35 divided by 365. इस पे मैंने कुछ कमाई की होती, कितनी कमाई की होती, 2.35 रुपीज. आर यू फॉलोइंग? बट अगर मैं डिस्काउंट अवेल कर देता हूं, मीन्स मैं जल्दी पे कर देता हूं, तो 98 रुपीज 10वें दिन पे चला गया. नाउ आई डोंट हैव एनी अमाउंट फॉर इन्वेस्टिंग आउटसाइड. क्लियर? सो कैन आई से माय नेट आउटफ्लो इफ आई रिफ्यूज द डिस्काउंट वुड बी हाउ मच? 100 चुकाने का, बट सामने इनकम भी होगी ना, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. सो माय नेट आउटफ्लो वुड बी 100 minus 2.35, 97.65. And in this case I have to pay entire 98 rupees. Are you following? So can I say it is beneficial for the company to refuse the discount? उसमें आउटफ्लो कम हो रहा है. Are you following everyone? Understood? This is how we evaluate. So to evaluate whether to avail the discount or not, step number 1, calculate the hidden interest that supplier is charging from you. ठीक है? Compare the hidden interest with ROI available outside. ठीक है? अगर outside, if you can earn more, then refuse the discount, invest outside, pay later. Are you following everyone? On the contrary, if you can earn less from outside, तो भाई ऐसा नुकसानी वाला धंधा मत करो. चुपचाप अर्ली पेमेंट करके डिस्काउंट लेके निकल जाओ. ठीक है? बिकॉज यू डोंट हैव कैपेसिटी टू पे द इंटरेस्ट दैट इज चार्ज बाय द सप्लायर. क्लियर एवरीवन?
आई होप एवरीवन अंडरस्टूड पेबल्स में। सी इफ यू सी, अच्छा यहाँ पे परचेज वैल्यू मैंने 100 लिया था, इन्होंने 10,000 लिया है, तो 10,000 में नेट आउटफ्लो 9765 आएगा एंड 9,800 आएगा. So can I say it is better for the company to refuse the discount as return on cash retained is more than savings on account of discount. Clear everyone? Understood? Payables management. So in short, if I summarize payables management, so step one, calculate implied interest charged by supplier. इसको लेमन टर्म्स में लिखना हो तो यू कैन राइट इट एज हिडन इंटरेस्ट. जो अभी तक हमें क्या लग रहा था, वो सप्लायर इज गिविंग अस डिस्काउंट, बट वेट, नाउ यू आर लर्नेड फाइनेंशियल स्टूडेंट्स. डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, उल्टा वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है हमसे. आर यू फॉलोइंग? इज इन ऑन द कॉन्ट्रारी चार्जिंग इंटरेस्ट फ्रॉम अस. क्लियर? स्टेप वन, कैलकुलेट इम्प्लाइड इंटरेस्ट रेट. स्टेप टू, चेक द आरओआई, ठीक है, या अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट रेट. बाहर कितना कमा सकते हो, चेक दैट रेट एंड कंपेयर योर इंप्लाइड इंटरेस्ट रेट विथ आरओआई. स्टेप थ्री, इफ, कंक्लूजन है, डिसीजन मेकिंग है ये, इफ इंप्लाइड इंटरेस्ट इज मोर देन आरओआई, ए मीन्स बाहर आप कम कमा पा रहे हो एंड इंटरेस्ट रेट चुकाना ज्यादा है, सो भाई चुपचाप avail the discount, pay it early. Avail the discount, pay it early. ठीक है, और निकल जाओ. ठीक है, दिस वुड बी योर डिसीजन मेकिंग. बट डिसीजन मेकिंग हैज टू बी बैक्ड विद सम कैलकुलेशंस. सो हाउ टू कैलकुलेट? यू प्रिपेयर दिस इवेल्युएशन वाला फॉर्मेट, दिस वन. अब प्रूव तो करो. चलो आपको आंसर पता है कि भाई रिफ्यूज द डिस्काउंट, सॉरी अवेल द डिस्काउंट में ज्यादा आएगा, बट शो सम कैलकुलेशन, शो सम वर्किंग. सो दिस वुड बी योर वर्किंग का टेबल. क्लियर एवरीवन? दिस इज हाउ यू विल इवेल्युएट, दिस इज हाउ यू विल शो कैलकुलेशन एंड कंक्लूड. कंक्लूजन सही है, बट प्रूव इट विथ सम कैलकुलेशन, प्रूव इट विथ सम वर्किंग्स. ठीक है, एग्जाम में आप, यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली राइट कंक्लूजन, दे वांट backings, workings behind that conclusion. Clear? And on the contrary, if implied interest rate charged by supplier is less than your outside ROI, the opportunity earnings from outside, then you refuse the discount. जो हमारे illustration में ये एग्जाम ये था, implied interest rate was less than ROI. ठीक है, you refuse the discount. Pay later, that is on last day. Last day से तो खींचना नहीं है, otherwise your credit image will hamper. Clear? So you have to enjoy full credit period, but last day पे तो पेमेंट करना ही है, otherwise आपकी क्रेडिट इमेज खराब हो जाएगी. Now this decision you have made, but you back it with workings and calculation. ये इवेल्युएशन वाला फॉर्मेट बनाओ. अच्छा, स्टेप वन के लिए इंप्लाइड इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है. So I have told you there are two methods. Either you can use approximation method, that is nothing but your interpolation method. 35 days के लिए 2.04%, तो 365 days के लिए कितना परसेंट होगा, तो 21.24%. और you can use compounding method, time value of money concept, present value, future value. 98 rupees को 100 बनाना हो for 35 days, then what would be the annual rate of interest? You will use compounding method. ठीक है, दोनों मेथड मैंने समझा दी. Understood everyone? Clear? So if you follow these simple steps, your payables management would be through. Easy. Okay, so first of all, I hope you have written these steps to solve it in Calci. These 6 steps. नहीं है तो you can just quickly take the screenshot. See again, this is my way of solving compounding rate of interest. मॉड्यूल में इसी की फॉर्मूला दी है.
Answer will come same. Okay, ultimately we have to reach Delhi. That is our objective. And I also feel that you should take the note of this conclusion. अच्छा ये format भी आप स्क्रीनशॉट ले लो. Format is the backing of your decision. कि भाई किस बेस पे you are saying you should refuse the discount. What are your working? Show that. Clear? So this is backing of your decisions, proof of your decision, evidence of your decision. Since net outflow is less if company refuses the discount, company should enjoy full credit period. Okay. So I hope you have taken screenshot of this. And I feel that you should take the conclusion of payables management. 3 step करने हैं. Step 1, calculate implied interest, the hidden interest that supplier is charging from us. Either using approximation method or either using time value of money method, that is also called as compounding method. Check the ROI, opportunity interest rate available. If ROI interest rate is less than implied rate charged by supplier, भाई फायदा इसी में है, डिस्काउंट लेके कैश डिस्काउंट लेके जल्दी पेमेंट लेके सो जाओ, घर चले जाओ. On the other hand, if implied interest rate is less than ROI, means you have more earning capacity outside, so stay invested outside, don't make the payment early. जितना हो सके वो बाहर इन्वेस्टेड रहो. हाँ, आखिरी दिन पे you make the payment. Clear? This is what payables management is trying to teach you. Okay. So now, still we have 8 minutes. There is one question from unit number 2 about cash cycle and cash turnover. So let's quickly discuss that. जितना सॉल्व हो सकेगा उतना करेंगे और एल्स वी विल डिस्कस. ठीक है. सो कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 11. ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 11. This is from cash and treasury management. They are trying to explain concept of cash cycle, which is very much same as operating cycle. Net operating cycle period हमने जो सीखा था वही है. ठीक है. But since there is question on cash cycle, let's solve it and move on. The following information is available in respect of Sai Trading Company. On an average, debtors are collected after 45 days. Inventories have an average holding period of 75 days. And creditors payment period is on an average of 30 days. Company spends a total of rupees 120 lakh annually. It earns 10% on investment. From the above, you are required to calculate cash cycle. A cash cycle is nothing but operating cycle. Operating cycle क्या था? It was nothing but conversion of cash back into cash. The time taken from the cash that I pay to the supplier back into the cash that I receive from the debtors. That was operating cycle. That was duration of operating cycle. That is nothing but you can also term it as cash cycle. Okay? So can I say cash cycle is nothing but, in other words, they are asking you operating cycle. The duration to complete the entire cycle, the cash that you pay to the supplier till the time the cash you receive from your debtors.
ओके, यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड दिया है, रॉ मटेरियल होल्डिंग, डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड ऐसा कुछ भी नहीं दिया है. सो वी विल टेक इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, वी विल एड डेटर्स एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड वी विल सबट्रैक्ट एवरेज पेमेंट पीरियड टू क्रेडिटर्स. यही सेम फॉर्मूला हमने सीखी थी, बस द एडिशन वाज इन्वेंट्री में तीन आते थे, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड प्लस एफजी होल्डिंग पीरियड. यहाँ पे ऐसा सब बाइफर्केशन नहीं दिया, सब एक साथ दे दिया, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. क्लियर? बट द फॉर्मूला रिमेन सेम. ठीक है. सो माई कैश साइकिल इज 45 प्लस 75 days, 75 plus 45 less 30. So it comes to 90 days, which is approx to 3 months. ठीक है, which comes to 90 days. Means आज मेरे जेब से कैश जाता है, वापस वही कैश विथ प्रॉफिट फ्रॉम डेटर्स कितने दिन बाद आएगा? 90 डेज बाद. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज 3 months. सो इफ वन साइकिल टेक्स 90 days, तो ऐसी साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी पूरे साल में? हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू ड्राइव दिस साइकिल इन द एंटायर ईयर? कैन आई से 360 डिवाइड बाय 90 और 12 डिवाइड बाय 3? 4 times. So therefore number of cash cycles in a year, it would be, assuming 360 days in a year, or 12 divided by 3. Can I say 4 cycles? So this number of cycles is nothing but your cash turnover. Are you following everyone? Cash turnover kitna means number of cycles kitna. So that is nothing but your cash turnover. ठीक है. पूरे साल में कैश साइकिल कितनी होगी? दैट इज योर कैश टर्नओवर, 4 cycles. एवरीवन फॉलोड? ओके. पूरे साल में द कैश रिक्वायरमेंट एनुअली इज 120 lakh. So proportionate to 90 days, how much cash I would need for one cycle? That is question number B. Minimum amount of cash to be maintained means पूरे साल में my cash annual cash requirement is 120 lakhs, but my one cycle is for 90 days. So एक बार if I arrange the funds, if I maintain the cash balance for 90 days, can I say my job is done? So minimum amount of cash to meet the payment. So that is how much cash? So it is nothing but 120 divided by number of cycles, formula 1 or formula 2. Formula 2 is minimum cash required for one cycle. Can I say it would be 120 lakhs is per annum. पूरे साल में 4 साइकिल होने वाली है, तो एक साइकिल का कितना? तो 1/4. और इन अदर वर्ड्स, और अनदर ऑप्शन, 120 lakhs is the annual cash. And I just want to arrange a minimum cash balance of 90 days because my one cycle is for 90 days. So in both the cases, your answer would be how much rupees? 30 lakh rupees. 30 lakh. ठीक है, मीन्स एक साइकिल के लिए यू वुड नीड 30 lakh rupees. हाँ, मीन्स वंस दिस 30 lakh यू इन्वेस्ट, फिर ये साइकिल 90 डेज में कंप्लीट होगी, यू विल रिसीव दैट 30 lakh अगेन यू विल बाय द इन्वेंट्री, सेल टू द डेटर्स, रिसीव अमाउंट, अगेन बाय न्यू इन्वेंट्री, सेल टू द डेटर्स, रिसीव अमाउंट. क्लियर एवरीवन? सो मिनिमम कैश दैट यू वुड नीड वुड बी 30 lakhs. क्लियर एवरीवन? फिर तो साइकिल चलती रहेगी. ओके. सेविंग्स बाय reducing the average inventory holding period by 30 days. Now scenario 3 is कि भाई ये जो एवरेज इन्वेंट्री पीरियड 75 डेज है ना, वो अब 30 डेज हो गया. मीन्स नाउ माई इन्वेंट्री सेलिंग फास्टर. So can I say my cycle period would fall down? ये मीन्स अब फास्ट कैश रिलीज होगा, बिकॉज पहले जो इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट होने में 75 डेज लगता था,
अब वही इन्वेंट्री 30 दिन में सेल में कन्वर्ट हो रही है. फास्ट इन्वेंट्री इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सेल्स. फास्टर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, गुड साइन फॉर द बिजनेस. फास्ट रिलीज ऑफ द कैश. सो कैन आई से नाउ माय कैश साइकिल विल गेट reduced by how many days? 30 डे, सॉरी, पहले 75 था, अब 30 हो गया. Sorry, by reducing by 30 days means 45 days is your inventory holding period now. So can I say my revised cash cycle would be 45 days of debtors plus inventory holding पहले 75 था and it is falling by 30 days. Are you following, everyone? So now my new inventory holding period is only for 45 days. अच्छा, payment period is same, 30 days. 30 days. Clear? So 45 plus 45, 90 minus 30 is 60 days. Can I say now my cycle will be of 60 days only? Yes or no? So cash turnover, number of cycles in a year would be 6 lakh. Correct? Sorry, 6 cycles. ओके, एक साइकिल के लिए मिनिमम कैश अब कितना रिक्वायर्ड होगा? सो देयरफॉर कैश टर्नओवर और नंबर ऑफ कैश साइकिल्स वुड बी 360 divided by 60, 6 cycles. If so, therefore, minimum cash required would be how much? Can I say minimum cash required would be? पूरे साल में 120 lakhs चाहिए. I need funds just to manage for one cycle. So 1 by 6, 6 2, it 20 lakhs. So now I need minimum cash of 20 lakhs. जो पहले 30 लाख चाहिए था. Earlier, original position was to maintain cash of 30 lakhs. Now I just need 20 lakh. Okay, so can I say I have now surplus of 10 lakh that I can invest outside and earn 10%? Yes or no? So that is savings. Understood? 10 lakh पे 10%, 1 lakh is your now savings in the form of interest. Following? पहले 30 लाख चाहिए था, now you only need 20 lakh. ये तो 10 लाख बच गए. Yes or no? 10 लाख पे 10% बच जाएगा. So 1 lakh rupees. Clear? Savings by reducing the inventory holding period. So in short, the story is like this. पहले हमारा इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट होने में 75 डेज लगता था. अब वही इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट होने में 45 डेज लग रहा है. 30 डेज से इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम हो रहा है. तो फास्ट सेल्स मींस फास्ट रिलीज ऑफ मनी. अच्छा, फास्ट रिलीज ऑफ मनी मींस कैश साइकिल का पीरियड गिर जाएगा. अच्छा, कैश साइकिल का पीरियड गिर गया तो नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएगी. ठीक है, अगर नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ गई तो कहने से मिनिमम कैश दैट आई नीड वुड बी लेस नाउ. आर यू फॉलोइंग? बिकॉज फास्ट कैश रिलीज हो रहा है तो अब ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, कम पैसों की जरूरत पड़ेगी. तो कहने से अब कैश में बचत होगी, उस बचत पे वी कैन अर्न सम इंटरेस्ट. क्लियर? दिस इज द होल समरी ऑफ द illustration. Illustration point C. I hope students you understood today's session about cash budgeting, optimum cash models, management models, about payables management as well. And with this, we end this session, we end this chapter, we end module 2 as well. Okay? We end FM as well. I hope it created some value addition to all the students. If you have any doubts, so institute does do conduct revisional live lectures as well. So revision classes bhi hote hai. Still, before that, if you want your queries to get resolved, you can email, you can connect, do whatever you want to do, but practice. All the best and pass with flying colors. Thank you. Tech team, I'm ending the session. Tech team. Okay, no response. Recording stopped.